मेरा नाम रुबिका लियाकत है। मैं हिंदुस्तान की धरती पर इस वक्त बैठी हुई हूँ और इस वक्त पूरी दुनिया मुझे सुन रही है। अल्लाहु अकबर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ माई कंट्री कि मैं जितना फ़ख्र से जय श्री राम कह सकती हूँ उतना ही फ़ख्र से अल्लाहु अकबर कहूँगी। आई वॉज ऑलवेज टोल्ड एंड आई एम स्टिल टोल्ड, किसी के बाप से नहीं डरना सिवाय अपने। आई डू एक्सपोज पीपल हु से कि इस्लाम जो है वो वायलेंट है, ये है, वो है। आई गिव इट बैक टू देम ऑल्सो, बट what would be much talked about, where I am going to expose a Maulvi. Imagine the Prime Minister of the country gives you a call and he wishes you well, he wishes you Eid, and he says if he could speak with Mama. I remember that shine in my mom's eyes. जितने भी trolls हैं, इनसे बस मुझे एक I want to tell them, all these male anchors, ये इनका कैरेक्टर असैसिनेशन कभी नहीं करेंगे। अगर आप बोल्ड हैं तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, और रेड लिपस्टिक लगाई है तब तो आपको शाहरुख खान की ही बात करनी, मतलब तब आप नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात नहीं कर सकते। What do you need a private part for journalism? No, you don't need. You need a good brain, sharp eyes. You need your nose to smell something is fishy. What do you mean, Sarah Banu? Deepika Padukone. Okay, talking about Chand sa roshan chehra. Zulfo ka rang. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is noted anchor Rubika Liyaquat. Rubika made a name for herself for her fiery style of anchoring news bulletins, whether in ZTV and now with ABP News, where she continues with the same style of picking up contentious topics and getting all sides of the debate on her shows. Rubika does on-ground reporting and is often criticized for editorializing news. She's active on social media, where true to her style, the posts are a lot about who she is as a person, fearless and bold. Being a progressive Muslim woman professional, she finds herself at odds with those who want to box her into slots. Here's Rubika Liyaquat uncensored. Rubika being a friend of mine, we discussed a whole host of topics and she spoke about her personal life, her trials and tribulations without hesitation. Rubika, thank you so much for coming on my podcast. I've been wanting, for viewers and listeners, I've been wanting to have Rubika on the show for several months. But मैडम जी तो कभी होती नहीं है दिल्ली में, मतलब कि हर चैनल जस्ट सीज कि हाँ यहाँ पे आग लगी है, मतलब न्यूज़ है, तो फिर रूबिका को भेजो. सो आई बीन टेलिंग हर शी इज़ लाइक अ फायर फाइटर. जैसे उसकी सिर पे एक लाल बत्ती होनी चाहिए, जैसे फायर इंजन को हर जगह भेजा जाता है, वैसे रूबिका को भेजना चाहिए. एग्जैक्टली. सो थैंक यू रूबिका फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज. और हर बार ये होता था कि हमारी बातचीत हो गई होती है and I would say I'm sorry I won't be able to come. I'm in Ayodhya, I am in Badrinath, I am here, I am there, but this time I'm nowhere. I'm here. You're here. I'm in here. Fact, podcast with Smita Prakash. Yes, thank you for plugging that. So, and if anything else, I used to say कि please elections गर्मियों में मत करना. कभी तो like we can enjoy a summer vacation, summer holiday, journalists. वैसे ही अगर one election हो जाए तो फिर माशाल्लाह it would be lovely for journalists, है ना? And it will never happen. It will never happen. Why do you say that? कोई मानेगा नहीं ना. कोई नहीं मानेगा. अगर आपको वो चीज़ पसंद है तो वो पक्का कोई नहीं मानेगा. So always I have made this a formula. Whatever I like, I'm never going to tell my boss. नहीं, but even politicians, मतलब privately मान लेते हैं that there should be one election every 5 years or maybe one mid-term election. पर ये जो continuous election की बात होती है, it's exhausting and I think it's a drain on resources. लेकिन कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि हो नहीं सकता. What do you think? No, I really think that it's a good idea. Huh. We should sit and discuss about it and find out a way, because you're absolutely right that उससे बहुत सारे resources, बहुत सारा time, you're always in election mode. है ना? So whenever you are in election mode, you're for the politicians, you are in the promise mode. You're never in delivery mode. So right. उसमें ये होता है कि
एक राज्य से दूसरे और फिर इलेक्शन में आपको खर्चा भी करना होता है, आपके पास नहीं है, या आप उस पार्टी में, आप वो वाली पार्टी नहीं है which is won the election, then obviously you would want it from the other states to help. This is how it goes. And उसमें होगा क्या, you will always be in that mode where you have to keep asking people to help you instead of helping people which you actually made to do, and you won't be able to do it. You don't do it. So I personally feel that ये एक इलेक्शन होना चाहिए, आप डिसाइड कीजिए, जिसको आपको चुनना है आप चुनिए, जिसको आपको बाहर धकेलना है धकेलिए, बट डू इट वंस एंड फॉर ऑल फॉर 5 years, एंड देन रिसोर्सेज बच जाएंगे, टाइम बच जाएगा, लोगों की प्रोमिसेस को डिलीवर करने का मौका मिल जाएगा. सो यू आर राइट. I mean, I openly say. Chalo, we'll get into politics, but before that, I think my viewers want to know everything about you as a person. कि journalism में कब, कैसे, मतलब did you always want to get into journalism या कुछ और बनना चाहती थी आप? What was the motivation to get into journalism? It's a very interesting story. So my दादी वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर उर्दू और अरबी शी न्यू, आलिम थी वो. सो शी वुड हैव कुरान इन हर हैंड. आई हैव सीन हर रीडिंग कुरान, और सारा टाइम वो वही करती थी. वो आपके साथ रहती थी? या दे वर लाइक 4-5 people in my family जिनको मैं आज भी याद रखती हूँ. सो माई फादर अ क्रिकेटर, माई मदर अ साइंटिस्ट. I remember my chacha who was struggling at that time. He was pretty young and he was trying to figure out what he wants to do. So sometimes he wanted to be a cricketer. Obviously he was playing for the state, but he wanted to model also. He wanted to have his business also. So I remember him and my dadi. And so these 4 people, and I was pretty young, probably 7-8 और शायद उससे भी पहले. लेकिन एक औरत जो सिर्फ खुदा को जानती है, किसी को नहीं. एक औरत जो सिर्फ साइंस को समझती है और किसी को नहीं. माँ. एक आदमी जो घर का मुखिया है, जिसके हाथ में बल्ला और बॉल दिखती है. एंड देयर इज दिस अनदर मैन जिसके हाथ में बायोडेटा है, और वो बदलता रहता है. So different characters in my family would sit down at around 9 in front of TV and would listen to this woman with flower, Salma Sultan. And I would just, kind of wonder that एक cricketer है, एक religious औरत है, एक बहुत पढ़ी लिखी well educated औरत है, and there's this confused man. इन चारों में से मुझे कुछ नहीं बनना है. मुझे तो वो बनना है जिसको ये सब सुन रहे हैं. ओके. एंड आई डिडंट नो दैट शी इज अ जर्नलिस्ट और एन एंकर. I didn't know. I just knew that this woman has got something. That she grabbed the attention of 4 disparate people, है ना? कि सबके इंटरेस्ट अलग हैं, पर वो उस वक्त सिर्फ सलमा जी को सबको बांध देती थी. And that is when probably, somewhere in your subconscious, it was there. और फिर शायद भूल गई. फिर बीच में मुझे पायलट भी बन जाना था, फिर कुछ और भी बनना था. फिर and then my father, he would look at these people, byline in the newspaper. So he thought कि इसको ये पढ़ाई करवाते हैं. ये है तो बहुत शैतान, बस ये लिख लेना और एक नाम आ जाए रूबिका लियाकत, तो ना मैं बस गंगा नहाया टाइप. सो ही सेड तू तो ये जर्नलिज्म की पढ़ाई कर ले. सो आई डिड इट. अब आज कभी कभी वो बैठते हैं और फिर टाइप की स्माइल होती है उनके चेहरे पर. एंड ही सेड यार मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था इतना सा कहीं नाम आ जाएगा इसका, ये शोहरत वगैरह. हाँ, और तुम तो ऐसे टीवी पर आ जाओगी, लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे. I did not think about it. But this is now you're talking about like from a mid-town level person in Rajasthan, है ना? Yeah. To think कि दिल्ली आओगे and दिल्ली में नाम कमाओगे, that didn't. So was it a big step for you to get out of the state, get out into the big bad world of journalism of Delhi? Noida rather. And before coming Bombay, to no? I went to
pursue my Bachelor of Mass Media there in Mumbai, Mumbai University. So, and would you believe, my father sent me alone, as in Udaipur se, and he knew that she is going to. So I chose which place I would be in. So Rizvi College was the one. जहाँ पर सारी बुरका नशी बच्चियाँ आती थी पढ़ने के लिए. ऑब्वियसली रिजवी कॉलेज है तो माइनॉरिटी वाला वो है. एंड देन आई फाउंड हॉस्टल फॉर माई सेल्फ YWCA. एंड देन फीस भी जो है वो आई कॉल्ड हिम. उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे. सो ही सेड यू हैव टू आई विल सेंड इट टू योर फुप्पी. एंड दिस फुप्पी, you know, she told me 6 months later, Smita, that your father told me she will do everything on her own. So he was preparing me, and I was angry inside that, you know, सबके माँ बाप आए हैं, मेरे माँ बाप नहीं आए हैं. But it was because they wanted me to taste that, you know, struggle बिल्कुल beginning में. They did not want to give everything in the plate. So anyways, I went there. उस दरमियान ऐसा होता था. यू रिमेंबर नॉर्थ इंडिया वर्सेस महाराष्ट्र में जो वो पॉलिटिक्स चलती थी, वो लोगों के जहन में भी बहुत बैठी हुई थी. वो हर 10 साल उठ के खड़ी हो जाती है. सो इट वाज देन आल्सो. आई एम टॉकिंग अबाउट 2003, 4, 5, 6 के आसपास. सो इंस्टेड ऑफ आई हैड 36 सब्जेक्ट्स इन टू कवर इन 3 years. आई डोंट रिमेंबर सिंगल बुक वो जो एकेडमिक्स की होती है. मुझे आई डोंट रिमेंबर नेम ऑफ अ सिंगल बुक, बट आई रिमेंबर एंड मेमोराइजिंग दीज 3600 characters that I met in Mumbai those 3 years, and it prepared me for the battle in Noida. Really? Yeah. Who are these people who influenced you so much? I wouldn't use influence as a word. I would use learning from them. So they were my you know, classmates, and there were teachers as well, and different characters. Okay, I remember these characters. So I was from Rajasthan, and they were from a metro city. बहुत फर्क है क्या? I'll tell you how. और मैं उस जमाने की बात बता रही हूँ, 2003-4 की. So I did my schooling from a convent school, but it was from Udaipur. तो वहाँ पे जो मेरे मलयाली टीचर थे, वो एजुकेशन को एडुकेशन बोलते थे. So obviously I learned it. So my accent also wasn't that great. So they would you know always make fun of me. Oh. And they would say, तो तुम्हारी मम्मा जो है वो तो घाघरा पहन के और दूर पानी लेने जाती होगी. For them, Rajasthan was Registan. And your mother is a scientist. and it was a cultural shock for me. And I was आप जनाब उदयपुर में जब हमारी बातचीत होती थी, बिल्कुल लखनवी नहीं है लेकिन राजपुताना है. So राजपुताना culture is also आप बैठिए, था बैठो सा, हाँ था कई कर रहा हो सा, हुक्म. और मैं जब वहाँ गई, ए तेरे को क्या? सो तो मेरे लिए ना बड़ा कल्चरल शॉक था वो. और मैं अगर उनसे कहूँगी कि अरे आप बैठिए तो वो कहेंगे अनारकली. उनका यू नो हम दोनों का मैच नहीं हो रहा था, हम सब का आपस में. एंड अच्छा, आई वुड नेवर बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप. दैट इज सो फनी. अनारकली they would call you. Yeah, because I would say आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे. ए तेरे को क्या अनारकली का कुछ वो प्रॉब्लम है क्या? True. The last they must have heard that was Mughal Azam. Yeah, क्योंकि वो आप जनाब में कौन वहाँ पर शायद नहीं इतना बात करते थे. तो अब मुझे हंसी आती है, तब मुझे बहुत सदमा लगता था. Because I was away from my parents. मुझे मिसल पाव समझ में नहीं आता था. I was a dal bati person. Okay. So there was a lot of difficulties, and then obviously the accent. ए तेरे को नहीं आता है, ए इसको प्रेजेंटेशन में नहीं वो करेंगे, इसकी अंग्रेजी इतनी बढ़िया नहीं है. You know, and अंग्रेजी नहीं, it wasn't the grammar they were talking about.
Delivery style. No, it was the accent. Accent. My accent was probably not as it is today. हाँ. So, but when I came to Delhi, मुझे बड़ा अपना अपना लगा. Okay. You know, more here I realized that people in the Hindi media industry are more from, you know, Bihar, from Rajasthan, बंगाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं. ये आसपास के वो थे और इसमें वो वाली कल्चरल शॉक वाली बात नहीं थी. आई एम नॉट सेइंग कि महाराष्ट्र जो है इनसे थोड़ा अलग हो जाता है, पर कल्चरली जो है मेल मिलाप इज ईजियर. ये तब मैं बच्ची थी और तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये वाला इधर मामला समझ में आ रहा है. पर वो उन 3 सालों में मेरे ख्याल से मैं अपने आप को वहाँ ढाल चुकी थी. मुझे समझ में आ गया था. अब मैंने ना मुंबई और दिल्ली इन दो को I would write about it sometimes because I have lived Mumbai, I have lived Delhi. Not in, I'm saying I've lived both the cities. Experiences, हाँ. Mumbai is अल्हड़ लड़की. You know, वो मदमस्त है. उसको कोई फिक्र नहीं है. वो बेफिक्री से जीती है, वो बेफिक्री से चलती है. Delhi is like a queen. Okay. उसकी हर चीज़ एकदम फिक्स है. लहजे से. हाँ, वो बड़े एकदम लहजे में चलती है. और उसके अपने पैटर्न है, उसका अपना. और मुंबई मदमस्त है, वो बेफिक्र है. So these are two places. Nice. Nobody says like that usually. You know, they say कि दिल्ली में लड़की सहमी हुई होती है, डरी हुई होती है, always scared कि कुछ हो जाएगा उसके साथ. Nobody refers to a Delhi girl as a queen. Maybe it is true that there are several kinds of Delhi girls. Yeah, there are. उस डरी हुई लड़की से, सहमी हुई लड़की से एक राजसी अंदाज में निकलना, it takes a little while to come to that level. Absolutely. And like I said, it has her own set of rules. And if you kind of stick with those rules, and I'm saying हर बार आपको ज़रूरी नहीं है कि rebellious होकर और bent ही करना होता है. मैंने दिल्ली के बारे में ये समझा है कि आप उसके सामने अकड़ मत दिखाइए, बिकॉज ये खुद एक मलिका है. एंड यू स्टे विद हर, डोंट ट्राई टू बी हर, एंड शी विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन. सो दिल्ली हैज, एंड आई इंस्टेंटली अंडरस्टूड दिल्ली व्हेन आई केम हियर. रियली? ओके. एंड आई थिंक मैं रात को 2-2 बजे 3-3 बजे यहाँ पर घूमती हूँ, लेकिन मुझे उसके रूल्स पता है. That I have to inform at least couple of people that I am going to be here. It could be my parents, it could be my husband, it could be my friend, my sister, anybody. And अगर मैं वो सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ जो करना चाहिए, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अब तक आई नहीं है. Rubika, I'm going to move on to a topic that, you know, initially I had thought कि मैं सिर्फ इस पे आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन there is more to you than just this. You can't be stereotyped. I can't be. But I will ask you because, you know, you have broken so many stereotypes. And I have always admired you for that. You know, I know your family and I know you as a friend for several years. But still, for our viewers, for our listeners, I need you to tell me what it was like growing up in a progressive household where, you know, there will be relatives, because as a progressive Muslim family, there will be also conventional kind of mores. रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं लड़की को बाहर कहाँ भेज रहे हो. ये हिंदू फैमिलीज में भी होता है, क्रिश्चियन फैमिलीज में भी होता है, सब जगह. बट आई वुड थिंक दैट इट वुड बी अ लिटिल मोर in probably in some of your family setup or your neighborhood or your friend circle of your mother. What was it like? And also to have such an educated family, your mother being a scientist, that influence on you. So do you know I'm ambidextrous? No, I didn't know. I use both my hands. और दोनों एक सरी का काम करते हैं. You know why? Because my father wanted me to be a cricketer. तो वो चाहते थे कि मैं लेफ्ट से बॉलिंग करूं और राइट से बैटिंग करूं. वाह. बट माय चाचाज डिड नॉट अग्री. उन्होंने कहा अगर इसने बल्ला उठाया तो हम बल्ला छोड़ देंगे. और
नाउ इफ आई थिंक कि अच्छा हुआ जुबान चलाई, बल्ला चलाती तो शायद यहाँ नहीं बैठी हुई होती. बट माई Who फादर knows? सेज, Yeah. हाँ, नो, बट माई फादर सेज कि नो, तुम बहुत अच्छा खेलती. हाँ. He worked hard on me. हाँ, because शिद्दत से you do whatever you do. That's why. जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया. सो ये तो मैंने घर में भी झेला है. दैट और ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्रेसिव नहीं है. माई चाचाज, माई साइड ऑफ पीपल आर प्रोग्रेसिव, बट दे कुडंट डाइजेस्ट द फैक्ट कि एक लड़की बल्ला उठा सकती है और ग्राउंड में खेल सकती है. सो देन दैट आइडिया वॉज ड्रॉप्ड. And because I succeeded in what I kind of pursued, तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है. पर हो सकता है कि वहाँ मैं बेहतर होती. तो like you're saying that opposition family से भी आता है, पड़ोसियों से भी आता है. And I was always a different girl. So when my parents agreed किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जर्नलिज्म की तरफ जाओ. एवरीबडी थॉट कि मैं वहाँ बॉम्बे गई हूँ तो पक्का पीछे डांस वाला कुछ करने गई हूँ बॉलीवुड में. एंड एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, एंड दे वुड ऑलवेज थिंक कि ये बहुत मॉडर्न है और ये तो बड़ा. एंड माई फादर एंड माई मदर वुड नेवर पे अटेंशन. And modern seen as a negative thing. वेरी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव. और वो आपको थोड़ा अलग ही देखते थे हमेशा. ये जीन्स पहनती है, ये स्कर्ट पहनती है, एंड ये स्कूटर चलाती है. आई यूज्ड टू, वो पापा का बजाज स्कूटर चलाती थी, गियर वाला. सो आई वुड डू ऑल दोज थिंग्स. मतलब जब बच्चियाँ सलीके के दायरे में रहती थी तब मैं वो सब तोड़ रही थी. एंड माई फादर सेड कि झीलों का शहर उदयपुर. सो रुबिका के लिए अब फतेह सागर छोटा पड़ गया था. शी नीड्स ओशन, वरना वो ख़त्म हो जाएगी. एंड दैट इज़ द रीज़न ही सेड कि अब तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पर वहाँ आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी में आपको हमेशा ऐसे ही देखा जाएगा कि अब ये क्या करेगी, ये तो घूमती रहती है, ये तो जीन्स पहनती है टाइट, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, और अब स्कूल ख़त्म, अब क्या करेगी. So, but he knew that she has potential, and my father is the one who pushed my mother to do PhD, and that is when she kind of discovered this species. That is Studied after marriage. Yeah, my father said you study. She was a clerical, वो 4th grade जो employee होते हैं, lab assistant. So she said, I can't. I have 2 babies. I won't be able to do it. And he said, I will take care of your babies. My father was just a graduate and a cricketer. So she disagreed कि अरे प्रैक्टिकलिटी में थोड़ी होता है, मुझे घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने, कपड़े भी धोने, खाना भी बनाना है, और मैं पढ़ाई PhD कैसे कोई कर सकता है. 5 साल उस वक्त बहुत बड़े होते थे. So he said, I will do it for you. And I remember my father bathing me and my sister, making, my choti and pony. For listeners and viewers, why this is so important, why I wanted Rubika to tell me all this story about her parents, because of this misconception that people have that in Muslim families, men don't encourage their women. Liyaquat Saab got his wife, looked after the family, and got his wife to do PhD after marriage. Go on, Rubika. And I still remember my mother keeping that जो thesis थी मेरे पापा के कदमों में. And I've seen my father working with her day and night. आप जब उस फैमिली में बड़े होते हैं, जब आपको, and my father would sometimes proudly say, so we were 2 little girls and we would see my father doing everything for, and he would proudly say, कोई कहता था कि जब मम्मा को वो लेकर जाते थे, so my मर्दों के मर्द मेरे my father, and he would say कि फातिमा जी है ना वो करेंगी, and my mother wouldn't do anything without him. So I come from that background, and I was always told, and I'm still told, किसी के बाप से नहीं डरना सिवाय अपने.
So if I have to get scared of someone, एक तो मेरा खुदा है, and then there is my father. And जब आप उस फैमिली से आते हैं, जब उस बैकग्राउंड से आप आते हैं जहाँ पर 3 औरतों में एक मर्द है और वो मर्द ये कह रहा है कि तीनों को कुछ करना है. All 3 of you have to do something. You can't be sitting home and you खुद मुख्तार. You have to become independent. You can't be dependent on anybody. All 3 women in their different, my sister is an entrepreneur. My mother obviously, जब उनको हमने देखा तो हमें भी कुछ करना था. Competition, एक healthy competition बन गया था. And then there was this coach of ours who would say, देखो ये तुमसे, she does much better than you. Motivation. Always, forever. So, and he had put these blinkers on our faces, Smita. मत देखो बाहर की तरफ, देखो ही मत. ये तुम्हें क्या कहते हैं इससे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए. सिर्फ एम सामने की तरफ रखो. और ये इतना काम आया, ये मेरी माँ को काम आया, ये मुझे काम आ रहा है, एंड ये मेरी बहन को काम आ रहा है. एंड वी डोंट लुक एनीवेयर. जिसको जो बोलना है कहे, जिसको जो सोचना है सोचे. मैं हूँ, ही इज देयर, एंड माई गॉड इज देयर. Nobody else. Yeah, because I mean, as an anchor, most women anchors get a lot of love and a lot of hate. I've seen people come to you and take selfies from anywhere in India to even in Dubai. I was with you in Dubai, Yes. and I've seen people coming and gushing about how great you are and they love your work. But I've also seen how much of hate and how much of disgusting comments come your way because of a certain because you editorialize your news. You're not just presenting, you come out in your news, like when you're talking about the hijab controversy, or when you're talking about anything, about a certain Maulana who'll say that ladkiyon ko ticket nahi dena chahiye, election ticket. I've seen that you put your views also, and because of that you get a lot of hate from traditional dakyanusi khayalat ke log. So I would think that somewhere you're getting a strength to battle that also, isn't it? Yeah. And there even if I put a dot, and if you want we can do a live demonstration. Put a dot and leave it. On Twitter? Yeah. The filth is going to come back. So I have started using Twitter as a bhopu. A speaker. Bas bol. Where I would say what I feel and I would not keep it to myself. You know what happens, Smita? Especially with my community. My people and majority of them, वहाँ बच्चियाँ नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये सबको पता है और ये आंकड़ों में है. ये this is a fact that is known to everybody. And जानबूझकर उनको मेन स्ट्रीम से दूर रखा जाता है. इसलिए दूर रखा जाता है ताकि जिस दिन उनको समझ आ गई, जिस दिन वो मेन स्ट्रीम का अहम हिस्सा बन गए, उस दिन there is nobody who can stop them. You see the kind of potential my community and my people have. आप कोई भी आप नाम लीजिए, सबसे शानदार कारीगर वो माइनॉरिटी से होगा. आप किसी तराशना छोड़े, अपने बालों को तराशने वाला कारीगर होगा. कारपेंटर जो है मतलब टैलेंट है. दे नो हाउ टू डू इट. थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे तो सोचो उनकी अपनी एक वेबसाइट होगी, उनका अपना एक ऐप होगा. पर वो कई ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि पढ़े लिखें. जिस दिन तो फिर उनका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा ना. फिर उनकी वो जो आइडियोलॉजिकल फाइट लेकर चल रहे हैं, जिनकी वजह से दीज पीपल आर देयर, everything is going to go down the drain. So they are kept aloof from the mainstream. And then what happens? मेरे जैसा अगर कोई पढ़ लिख लेगा और सोसाइटी में नाम वाम पालेगा, the first and the foremost thing that same person is going to do is come out of the ghetto. And then they will start socializing. And they will sit with you and talk 10,000 things about my community. And they will go back to the community on Friday and they'll talk different things about you to the community. They will create a bigger wall between my community and the outside world.
You have become good. You have earned well in your life. You have got education. Give it back to the society, no? You will just you will have the bestest of things in the world. You'll come out of that ghetto. You will enjoy as much as you can. And when it comes to kind of educate your society and tell that, no, you have to agree with what they are saying. ये जो triple talaq है, this is not right. In closed doors, you would say, yeah, this is all bakwas. And in front of the कॉम यू वुड से नहीं मैं आपके साथ हूँ, ये मुसलमानों को डराने का काम हो रहा है. And what am I doing? I'm exposing this also and this also. Yeah. So I will get, kind of abuses from both the sides. And does it upset you? Sometimes you get upset. But then what I do is I just kind of, brush that dust off my shoulder. And how does that matter? एक तो वक्त भी नहीं होता. You're constantly on air. तो वक्त कहाँ है to vent emotions. But there are times, I guess, it does upset. It used to. हाँ. It used to. मुझे ऐसा लगता था यार ये लोग मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं. What is wrong? I am trying to do something for my society. हिंदुस्तान को एक करना, हिंदू और मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उनको तोड़ने जैसा कैसे हो सकता है. All these people जिनको मैं अब तक एक्सपोज करते हुए आई, I'll just give you one instance. There was this probably आगरा का हाँ शायद आगरा का ही कोई आलिम था. सो ये भाई साहब ने फतवा जारी किया. एंड फतवा ये था कि आप वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं. सो आई सेड वील डू अ फोनो. एंड बिफोर दैट आई जस्ट कॉल्ड द रिपोर्टर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया एंड आई आस्क्ड कि ये भाई साहब के बच्चे हैं. तो बोले माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं. अच्छा क्या करते हैं? तो बोले छोटे छोटे हैं. अच्छा स्कूल में जाते हैं? हाँ जाते हैं. कौन से स्कूल में जाते हैं? सो इट वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल. तो मैंने कहा भाई मेरा बस एक काम कर दो, जस्ट गो एंड फाइंड आउट कि वहाँ पर मॉर्निंग असेंबली होती है और क्या वहाँ पर वंदे मातरम होता है, जनगणा मना होता है. एंड ऑब्वियसली होता है. तो भाई साहब तुम्हारे बच्चे तो जनगणा मना वंदे मातरम सब, और तुम फतवा जारी करोगे. एंड आई डिड एक्सपोज हिम ऑन एयर. एंड आई डू एक्सपोज पीपल हु से कि इस्लाम जो है वो वायलेंट है, ये है, वो है. आई गिव इट बैक टू देम ऑल्सो. बट what would be much talked about, where I am going to expose a Maulvi. And why wouldn't I? अगर आप गलत हैं और अगर आप इस्लाम को तोड़ मरोड़ के you are going to give it to the people or my qawm, I will expose it. कोई बात नहीं है, मुझे कुछ दिन गाली देंगे. After some days or probably some years, they would realize that I wasn't wrong. For example, on the hijab thing, I remember that MIM, what's that spokesperson's name? जो बॉम्बे में है. वारिस पठान. Right. So with you. अस्सलाम वालेकुम वारिस भाई. Waris Pathan और आपके बीच, where he was telling you about how it is in the Quran, and he was trying to tell you that it is in the Quran and that hijab is compulsory. He was trying to tell you, and you said, अच्छा मेरे को सुनाएंगे आप. And so, what happened was that I saw that on air, and I saw it the other day, and then I had Owaisi, Asaduddin Owaisi in my show, and I was asking him what he had said about hijab, because he had said that inshallah one day there will be president of India जो hijab पहनने वाली Muslim औरत होगी. So I asked him, I said, why do you have to say hijab पहनने वाली? You can have a Muslim, right? Whether hijab or not. Do you ever say that बिंदी पहनने वाली, घूंघट ओढ़ने वाली हिंदू महिला president बनेंगी? No, Hindu will be a president, a Christian will be a president. कोई बोलता है? Nobody. Why is that hijab पहनने वाली important? Because you see, his speech somewhere is something else, somewhere is something else. So the same thing, and that's why I want to ask you is that what is your view on it? Because you've done this fabulous Instagram post. I'm going to play that Instagram post, and after playing that Instagram post, I'm going to ask you to speak on it. कि क्या इस्लाम में हिजाब कंपल्सरी है? क्या इस्लाम में
हिजाब अनिवार्य है, जरूरी है। मैंने बहुत सी आयतें पढ़ी, बहुत से कुरान के चैप्टर्स खंगाले। इनफैक्ट जितने भी आलिम शख्स हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल पर ये आर्टिकल लिखे या उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो पढ़े। और अब मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी जो मेरी समझ में अब तक आया है। और इसको प्लीज अपने दिमाग में जितने भी सवाल या प्री कंसीव नोशंस हैं उसको हटा कर रखिएगा। जितने भी लोग हिजाब पर बार बार चर्चा करते हैं, जो हिजाब शब्द का जो प्रयोग होता है, या आप करें या कोई और करे, औरत के सर या बाल को ढकने वाले स्कार्फ से उसका कोई मतलब नहीं है। कुरान में 7 मर्तबा हिजाब का जिक्र आया है। और हिजाब जब वहां पर कहा जा रहा है तो वो हेड स्कार्फ के रूप में नहीं उपयोग किया जा रहा है। उन चैप्टर्स में जब हिजाब का जिक्र हो रहा है तो वो एक दीवार के तौर पे, एक पर्दे के तौर पर, खुद पे चढ़ाया गया पर्दा नहीं, मेरे और सामने वाले के बीच में एक पर्दे के तौर पर उस रूप में उसे इस्तेमाल किया है, या एक मास्क के तौर पर उस रूप में इस्तेमाल किया गया है, या फिर वो जो आपको सामने वाले से छुपा रहा हो उस रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, हेड स्कार्फ के रूप में नहीं। ये समझ लीजिए, कुरान की मैं बात कर रही हूं। नाउ लेट्स कम टू दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसकी वो वर्स जिसमें हिजाब का सबसे ज्यादा जिक्र करते हुए मौलवी हो या तमाम दीन के जानकार हो कहते हैं कि देखिए इसमें चर्चा हो रही है या नहीं। आज एक भाई साहब यहाँ पर आए थे, अपने आप को इस्लाम का जानकार कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि हुजूर के खानदान की जो बच्चियां, हुजूर के खानदान की जो औरतें, हुजूर के खानदान की जो बीवियां जिस तरीके का पहनावा रखती थी, हमारा जो इंस्पिरेशन है वो है, हम उनकी तरह जो है पहनना चाहते हैं। वो जो भी बात करने की कोशिश कर रहे हो या बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, सच ये है कि कुरान में जिक्र इसी बात का है। हुजूर के घर से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के प्रति सम्मान को लेकर उस हिजाब का, उस दीवार का, उस पर्दे का जिक्र हुआ है। और स्पेशली सूरा अज़हाब में इसका जिक्र किया है। सो इट इज 33:53। वो उस वर्स में ये कहा गया है, मैं हिंदी तर्जुमा करके आपको बता रही हूं कि आप उनके घरों में बेवजह नहीं जाएंगे। उनके कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं चाह तो रही थी कि हू बहू जो लिखा है उसमें वो पढ़ के बताऊं, लेकिन मैं आपको लब्बो लुबाब उसका बता देती हूँ, थोड़ा आसान रहेगा और छोटा भी रहेगा। कि आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जा रहे हैं तो आप वहां पर जब तक जरूरी ना हो नहीं रुकेंगे। खाना जब पक रहा है उसके इंतजारी में आप नहीं रुकेंगे। आप वहां पर पहुंचेंगे, आपका काम हो जाता है, आपको खाना खिला दिया जाता है, आप बगैर वक्त जाया किए वहां से निकल जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु, और ये सब कहा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े शर्मीले हैं, वो आपसे ये बात कहने में शर्मा सकते हैं, पर अल्लाह नहीं शर्माता है। अल्लाह तुमको ये हिदायत देता है कि जब तुम उनकी बीवियों से, उनकी औरतों से मुखातिब हो तो पर्दे के रहते मुखातिब होना, वरना तुम्हारे दिल में उनके लिए कुछ और ख्याल आ सकते हैं। और फिर हुजूर के बाद अगर तुम उन्हें अपनाने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। दैट्स ये पूरा तर्जुमा मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। यहाँ पर हिजाब का जिक्र हुआ है, तो हिजाब हुजूर के खानदान से ताल्लुक रखने वाली औरतों को लेकर हुआ है, उनके खानदान की बीवियों को लेकर हुआ है। दूसरा जो जिक्र आता है वो हिजाब का नहीं है, वो खिमर का है। सो मैं आपको ये बता दूं कि खिमर जो होता है वो आप ऐसे, हिजाब तो आपने इस तरीके से कवर कर लिया, खिमर जो है वो आप पहनते हैं और वो नीचे तक यहाँ पर जाता है। उस वक्त अरब की औरतें अपना सर तो उससे बांधती थी, लेकिन गर्दन से लेकर अपने सीने के नीचे तक खुला रहती थी।
ये और अरब में उस वक्त जो है लोगों को इतनी समझ और वो अक्ल नहीं थी। तो हुजूर ने तब फरमाया था कि तुम जो है अपने बदन को और अपने प्राइवेट पार्ट्स को इस तरह से ढको कि कंफर्टेबल हो जाओ और उसे उन लोगों के सामने तुम रिमूव कर सकती हो या निकाल सकती हो। अपने पति का जिक्र किया था और उन्हीं के सामने आप अपने पति के ही सामने अपने आप को अनकवर कर सकती हो, लेकिन तब तक अपने आप को बचा कर रखो, क्योंकि औरतें गले से गर्दन से लेकर नीचे तक जो है अपने आप को खुला रखा करती थी। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? और इसीलिए वो जो पढ़ी लिखी औरतें और खासकर जो स्लेव्स उस वक्त हुआ करती थी वो इसी तरीके से रखी जाती थी। तो फिर कैसे आप बाकी फैमिलीज की जो महिलाएं हैं उनको अलग करोगे? अब ये सिस्टम नहीं है, शुक्र है ऊपर वाले का और शुक्र है लोकतंत्र का, लेकिन आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो उनसे कहा गया कि आप खिमर का इस्तेमाल करें। वहां खिमर नहीं बोला है, हुमरहीना का जिक्र किया गया है। और मैं अन्नूर की बात कर रही हूँ, चैप्टर 24:31, जिसमें ये कहा गया है कि जो ईमान वाली औरत है वो अपने सर से लेकर अपने चेस्ट तक को कवर करेगी। अब उस वक्त ये पहनावा नहीं हुआ करता था। क्या आज की तारीख में औरतें बगैर खुद को कवर किए निकल रही हैं? ये तब का जमाना था, तब इस बात का चर्चा था। और इस्लाम ये बात कहता है कि नो कंपल्शन इन रिलीजन, किसी चीज की जबरदस्ती नहीं हो सकती है। आप कहेंगे कि अरे ये हमने कहा जबरदस्ती की, लड़की पहनना चाह रही है पहन लीजिए। आप 2-2 साल की छोटी बच्चियों को अपने घर में, आपकी कोई छोटी सी बच्ची है साल भर की, 2 साल की, जिसे ना समझ है ना अक्ल है अभी दुनियादारी की, आप उसे रोज जो है जबरदस्ती कोई भारी कड़ा पहनाना शुरू कर दीजिए, इस हाथ में, गले में भी और पाँव में भी, और जहां आप चाहते हैं, एकदम एकदम भयंकर वाला। वो उसी के साथ पलेगी बढ़ेगी और फिर वो मान कर चलेगी कि ये जो है ये आई एम कंफर्टेबल विद इट, मैं हमेशा से यही पहनकर बड़ी हुई हूँ और अब इसे आप रिमूव कर देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप उसके पैर में जो है बेड़ियां डाल दीजिए और उसके बाद उसी तरह से उसकी परवरिश कीजिए, और फिर जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो कहेगी कि नहीं, मैं आई एम कंफर्टेबल विद इट, मुझे आदत है इस चीज की। आप उस छोटी सी बच्ची को वो बगैर समझे, उस छोटी सी बच्ची को जब आप रोज खिमर पहनाने लगते हैं या हिजाब पहनाने लगते हैं, फिर वो उसके साथ बड़ी होती है। फिर जब आप उसे रिमूव करने के लिए कहेंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो अब ये बताइए कि कौन गलत हुआ? उस बच्ची को डिसाइड करने लेने दीजिए ना, जब वो बड़ी होगी वो डिसाइड करेगी। अगर उसे पसंद आएगा खुद को कवर करना तो वो करेगी, और अगर उसे पसंद नहीं आएगा, पीयर प्रेशर और सोशल प्रेशर ये डालकर तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, और यही होता आया है। अब जब आप बराबरी की बात करते हैं तो मर्दों को तो आंखों का पर्दा और औरतों को काला बड़ा सा पर्दा। अल्लाह ने तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं किया है, और पर्दे का कंपल्शन तो कहीं नहीं है। किसी एक आयत में आप मुझे बता दीजिए जहां पर इसको बकायदा पर्टिकुलर मॉडल बना दिया गया हो यूनिफॉर्म का या कपड़े का। कहीं भी नहीं है, किसी भी आयत में इस बात का जिक्र नहीं है कि इसको पहने बगैर तुम मुसलमान नहीं होगी, या इसके बगैर जो है तुम इस्लाम की राह पर नहीं चल पाओगी। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। और इसीलिए दुनिया भर की औरतें, खासकर ईरान में आप देखिए, महसा अमीनी, वो तो बचपन से उस चीज के साथ और पली बड़ी थी ना, और एक टाइम आया जब वो समझने लगी। मैंने इतने इंटरव्यू देखे हैं ईरान की उन औरतों के, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं ऊपर वाले को शुक्र अदा करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई, जहां मुझे आजादी से डिसाइड करने का हक है कि मैं क्या पहनना चाहती हूँ, नहीं पहनना चाहती हूँ। फिर आप कहेंगे अच्छा तो फिर आजादी से तो मैं बुर्का भी पहनना चाहती हूँ, मैं तो हिजाब भी पहन सकती हूँ। आप पहनिए, कोई पाबंदी नहीं है, पर स्कूलों में इसका इस्तेमाल अगर स्कूल के नियम नहीं कहते तो आप थोप तो नहीं सकते ना। फिर आप जाइए अपने उस हिसाब का स्कूल ढूंढिए जहां पर हिजाब अलाउड है, पर आप इसे जबरदस्ती हिस्सा नहीं बना सकते ये कहकर कि नहीं ये तो इस्लाम में कंपलसरी है। इस्लाम में कोई कंपल्शन नहीं है इस चीज को लेकर।
तो गुमराह करना वो तमाम जो दुकान खोलकर बैठे हुए हैं ना अपनी अपनी पार्टियां चलाने के लिए और वोट बैंक को बड़ा करने के लिए, वो जरा इस बात को समझ ले। ईरान से ज्यादा इस्लाम नहीं है उनके पास, उस जमीन के बेहद नजदीक है और वो ये जानते हैं। So now my question to you is that you put all this out there. It's not as if you're talking upri. You have gone into it, you have read it. And so what do you have to say to people who don't want to listen to this but have their own view, their own interpretation about it? So I have explained. हिजाब इज़ नॉट द स्कार्फ वी आर टॉकिंग अबाउट. वो तो नन भी पहनती हैं हमारे हिंदुस्तान में. ओके, योर बाबा आदम के ज़माने की ना जर्नलिज्म में. That is true. Yes, you have the liberty to say that. बहुत साल हो गए. And your father has a lot of stories. Your father-in-law have a lot of stories to share with you. आप उनसे पूछिए ना कि and I challenge you, Smita, I challenge you. Just find women around 1947 or before that, और ये जो मुगल वाला पीरियड था, where was the burqa? Do you remember any मुगल एम्परर की बीवी बुरके में? No. तो पासे में नजर आती है. हाँ. They have different style of their clothes. कहाँ है? Where is the burqa? Where did it come from? अचानक कहाँ से आया? You tell me one freedom fighter of Hindustan. इतनी सारी मुस्लिम औरतें हैं. You remember any of them wearing burqa? Give me one name जहाँ पर आपको शटलकॉक बुरका दिखाई दे रहा है या काला बुरका दिखाई दे रहा है. They used to wear साड़ी और उसके ऊपर चादर लपेटते थे. मैंने अपनी दादी, मेरी परदादी, इन सबको मैंने वो चादर लपेटे हुए देखा. दैट्स द परंपरा ऑफ माई ज़मीन, माई कबीला. और हुजूर पहले अपने कबीले के थे. ही वुड से दिस, यू नो, कबीला इज एन इम्पोर्टेंट. व्हाट इज माई कबीला टुडे? इफ इन दिस एंटायर वसुदेव कुटुंबकम या पूरे दुनिया में, इफ यू आस्क पुराने हिसाब से अगर आज डिफाइन करना हो, व्हाट इज माई कबीला? माई कबीला इज हिंदुस्तान. दैट्स माई कबीला. क्योंकि कबीले बाउंड्रीज में बटे होते थे ना, कि ये पहाड़ के नीचे वाला कबीला है, ये झरने के पास वाला कबीला है, ये फला कबीला है. सो माई कबीला ज्योग्राफिकली इज इंडिया, एंड आई वुड फाइट फॉर माई कबीला, नो. एंड माई कबीला हैज़ अ परंपरा. व्हाट इज दैट परंपरा? माई दादी परदादी यूज्ड टू हैव अ साड़ी, उसके ऊपर चादर लपेटती थी. हमारे यहाँ कोई बुरके का रिवाज नहीं था. एंड मैनी ऑफ देम वुड नॉट लाइक इट. बट यहाँ हम ज़्यादातर जो मुसलमान आए हैं, माई फादर हैज़ टोल्ड मी, मेरी जो 7 पीढ़ियाँ हैं मुझे उनके नाम पता है, मेरे परदादाओं के नाम मुझे पता है. और वो तमाम जो एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ काइंड ऑफ कमिंग एंड गिविंग अस ज्ञान हियर अबाउट इस्लाम, वो अपनी 7 पीढ़ी मुझे बता दे. माई 8वीं पीढ़ी मस्ट बी अ सनातनी. एंड वी आर टोल्ड दिस. और इसमें क्यों आपको शर्माना है या आपको क्यों सच छुपाना है? अल्लाह तो हक की बात करने वाला है ना. एंड इस्लाम इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू रिलीजन. ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टेड. वरना सब तो क्रिश्चियन रहते ना, सब तो ज्यूज होते, सब तो सनातनी होते. सो यू कन्वर्टेड, नो. सो माय 7वीं जो मेरे थे, उनसे पहले वाले सनातनी रहे होंगे एंड दे कन्वर्टेड. सो मैं अपने पुरखों की परंपरा, व्हाट इज़ माई पुरखों की परंपरा? उन्होंने इस्लाम कबूल किया. दैट्स ये उनका फैसला था. मैं अपने पुरखों का फैसला और इस ज़मीन की परंपरा साथ लेकर चलूँगी, और कोई माई का लाल मुझे इससे रोक नहीं सकता है. माई परंपरा इज़ हिंदुस्तान की परंपरा. एंड आई वुड, यहाँ की संस्कृति जो मेरे 7वें जो परदादा थे उनसे पहले वाले निभा रहे थे, उसके बाद उनका फैसला पलटा, मैं उस फैसले के साथ रहूँगी और परंपरा के साथ रहूँगी. व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? But what you are saying is your Kabila, which is Hindustan, a geographical boundary. But there are many who say that that's not it. They say that Qaum is not the geographical boundary of Bharat, of Hindustan. It is somewhere else, isn't it? So go and ask those who are located somewhere else. Would they
open their arms for these people here who are saying कि वो ये हमारा कबीला नहीं है, we belong there. Be practical. और सबको ये पता है. Everybody knows about this, Mita, कि जितनी the kind of love, the kind of affection, the kind of respect that you get here, an Indian Muslim, would you get anywhere else? They would say no. And they are very clear about it. They wouldn't get it. And please, we have to kind of separate these two. People who are playing on behalf of my qawm and my qawm. These are two very different aspects. हम लोग इसी में गड़बड़ कर जाते हैं. Whenever I am on ground, I am in touch with my people, my community. And they are not like that. There's no dar ka mahal in your community when you meet. There's no घबराहट that there is no space for an Indian Muslim in India. जो ये foreign media भी कहती है और जो left liberal media भी कहती है भारत के बारे में. You ask them. You come with me, I'll take you to whichever ghetto you want to go. और वहाँ की सबसे बुजुर्ग औरत से पूछ लेना. The eldest woman in that area. Go ask her. Are you scared? Because my nani, Hayati mein wo abhi, she is alive. She is 96 years old. Ask her, what is your most precious, valuable thing? She wouldn't point at her daughters and son. She would just look at the Quran, which is kept by her side all the time. And she would point there and she'd say, ye hai. And you try to snatch that from her. From a 96-year-old woman. She wouldn't give it to you. And I guarantee you can't do it to any woman, any Muslim woman in India. कोई हमारे अंदर डर वर नहीं है. कोई, I am telling you, just go and ask any woman कि आपको डर है. किस बात का डर? हमें कोई डर नहीं है. But there are people who would say, देखो मेरी कौम डरी हुई है, आप इनको कब तक डराएंगे? This needs to go away. And when I say this, I am given names. जब मैं कहती हूँ कि ये और इस हिंदू और इस मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है, I am called a संघी. I am called a right winger. What is a right winger? Keeping India united is right winger. Talking about your parampara, your culture is right winger. And being proud of it is right winger. A Muslim woman cannot talk about Indian culture. You become right winger. It happened recently when you went to Ayodhya and Dhanteras. You celebrated because you said that my mother used to tell me, Bartan kharido, Dhanteras wale din, and now my sister reminded me. You put out that. Yes. And then there was a blowback for that. Yeah. क्योंकि ये परंपरा की बात थी, ये tradition और religion कहीं पे conflict में आ गया ना? हाँ. कुछ लोगों के लिए, not for you. No, for me it is not there. For my children it is never going to be there. For my family, for people who know me. And you're talking about me, there are so many families. Smita, many people need to know this. That there are many families in India जो आज भी इसको सेलिब्रेट करते हैं. वो जाकर कुछ खरीद कर लेके आते हैं क्योंकि उनके बुजुर्ग करते आए हैं. अब ये पॉलिटिकल लड़ाई की वजह से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजीज एंड yes, this is a fact that they do not like BJP. And they have no qualms in saying that. And even this party knows about it. So anything that happens in the regime or anything that is done by the regime, उसके हमेशा 10 तरीके की उसके माने निकाले जाएंगे, meanings निकाली जाएगी. I'm not going to get into that. Sure. But what I'm trying to say is that it's happening today that they are being seen this way. ये तो हमेशा से चला आ रहा है. हमारे बुजुर्ग खरीदते थे और पर वो कम होता है. Rubika, you understand, like for example, you went and did this. अब the anger that came towards you, there'll be many others who probably are doing that, but when they see this thing happening
and maybe their neighbors don't like it, फिर अगली बार वो नहीं करते. ऐसे करते 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 ना things become lesser and lesser. I remember also that you wear a bindi, you wear gajra in your hair, you go, you wear a sari, you celebrate all these things, but then comes this thing, why you doing it? Why you, everything becomes something to beat you with. Yeah. और फिर And I'm doing it for a reason. Because I'm being paid. हाँ. You know? हाँ. Yeah, because I've been given a certain task. हाँ. जेम्स बॉन्ड के साथ में एक वो है, उसको एक टास्क दिया गया है. You really think हाँ. that I would put a bindi for a task? You really think I would wear a sari because I've been given a task? I have been doing it forever and ever and ever. Yeah. And I'm telling you, Smita, just close your eyes and try to remember a Muslim woman back then. 2014 के पहले. तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तब ये साड़ियाँ भी पहनी जा रही थी, तब बिंदी भी लगाई जा रही थी, दिवाली भी सेलिब्रेट की जा रही थी. तब वो सेक्युलरिज्म था. और आज अगर उसी सेक्युलरिज्म को सेलिब्रेट किया जाए तो यू आर टैग्ड. So like we were talking about hijab, right? So which you said it in your many shows, when the whole question about that Karnataka girls came up कि वो hijab पहना, तो तालीम ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ट्रेडिशन हिजाब पहने ही ज़्यादा ज़रूरी है. What is more important to a girl at that stage? That's also a tradition. She doesn't want to break it. But फिर what is more important? आई थिंक दीन और दुनिया हम दोनों साथ लेकर चलने की हमें बात बताई जाती है. बट हैज़ एनीबडी स्टॉप देम टू वेयर इट इन द गली मोहल्ला? No. In the market? No. Has anybody stopped them to wear it wherever they want except the institution where they're going for the education? और वहाँ भी ये नहीं कहा जा रहा है कि you will not wear it from the घर. It is said that when you enter, you will have to kind of quietly keep it in your cupboards or bag or whatever, so that there is what is uniform. For God's sake, use your brain. Uniform is for the uniformity. You are no different from me. He being rich or she being rich is not there. You're wearing a uniform. You're wearing same kind of dress, clothes, ताकि किसी तरह का कोई difference ना हो. That's the simple idea behind it. And now if you start to, and then say, क्यों? आपने कलेवा पहना हुआ है तो कुछ नहीं, आपने बिंदी लगाई है तो कुछ नहीं. अरे भाई, आप काजल लगा दो. आप बिंदी नहीं, आप ऐसा करो, लॉन्ग पहन के चले जाओ. और कलेवा और घूंघट में फर्क है ना, कि आप बिटिया वहां पर घूंघट पहन कर जा रही है. नो. क्या वो जो नन्स पहनती हैं वो टोपा लगा के जा रही? नो, दे आर नॉट गोइंग दैट वेज. Don't try to make कलेवा एंड बुर्का सेम पार्ट, सेम थिंग. आपके यहाँ भी जब आप निजामुद्दीन वो पहन के चले जाइए ना. But just because you know they are targeting us, this victim card, have debit card, have credit card, have all the kinds of cards you want to have. Do not have this victim card. It is not going to take you anywhere. It will put you in debt. That's what I really want to tell all these people, especially जिनको ये लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है. Ask yourself, look in the mirror and ask yourself, आपके साथ गलत हो रहा है? And they will say no, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है. पर अगर 20 बारी बताया जाता है ना लड़की को या लड़के को या जिसको भी, that no, you are being discriminated, बार बार जब बोलते हैं ना तो वो जहन में बात चली जाती है. It's easy, it's a comfort factor. भाई, I can't compete because I'm being discriminated. मेरे को नौकरी मिली नहीं because मेरे नाम में खान लिखा हुआ है, so I didn't get the job. I didn't get the movie that I want to act in because I have a particular surname or whatever. But if एक दरवाज़ा बंद हो जाता है. वैसे तो anybody can ना. हिंदू कैन से कि मेरे नाम के अगेंस्ट पासवान या यादव रखा हुआ है इसलिए, और मेरे को इंटरव्यू करने वाला अपर कास्ट बंदा बैठा हुआ था इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली. यू कैन फाइंड मैनी रीजंस फॉर फेलियर्स. यू ट्राई अनदर वे.
एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुल जाएगा. Don't you agree with that? No, you're absolutely right. And you in ANI might have a lot of people who belong to different caste, community, religion. So what you think that way is कि ये Mr. Khan है, नहीं, मुझे तो Mr. Mishra से काम करवाना है. Who thinks that ways? Nobody thinks that ways. And they have more better things to do. I'm not saying all of them, I'm not going to paint everybody, in the same color. इक्का दुक्का केसेस आते हैं एंड एवरीबडी नोज, वो सब जगह होते हैं. वो इंडिया में हो रहे हैं, वो अमेरिका में भी होते हैं, एंड इट हैपेंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. और अमेरिका वगैरह में दे हैव टू ब्रिंग अबाउट इन प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल दैट डाइवर्सिटी पॉलिसी इन हायरिंग, कि आप, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक्स को हायर नहीं करते, एंकर्स के तौर पर ब्लैक्स को हायर नहीं करेंगे, एक सर्टन आउटलुक होता है कि ऐसे. हमारे यहाँ दैट्स नॉट द केस. वी हैड अ डाइवर्सिटी पॉलिसी इन हायरिंग इवन बिफोर इट बिकेम फैशनेबल कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, राइट? मतलब हमारा न्यूज़ रूम अगर आप देखें हर जगह, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट ANI बट इन योर न्यूज़ रूम ऑल्सो, कोई सोचता थोड़ी ना है कि आपके कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है. देयर आर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स. व्हेन यू आर सिटिंग इन द कैंटीन, people of all religions are there, right? No, you start your day, it starts from a person who's from a different community, different religion, and you end your day or is beach, these 24 hours you have 10 different people from 10 different part of the kind of country. They belong to different sects, they belong to different families. Can you kind of separate them? You can't. So this पर ये लिव्ड एक्सपीरियंस है ना रुबिका, कि यू फीलिंग दिस. आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू. ये लिव्ड एक्सपीरियंस है. अब उसी बंदे को जब वो मस्जिद में जाता है, इन द मिडल ऑफ द डे ही गोज फॉर हिज प्रेयर, टेक्स अ ब्रेक, बॉस गिव्स हिम अ ब्रेक कि हाँ तुम जाओ प्रेयर करके आ जाओ. उस मस्जिद में जब ये कहा जाएगा कि यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, क्या वो डिसोनेंस नहीं होता? एक अलग थिंग इज बीइंग टोल्ड टू यू दैट यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, लेकिन वर्क प्लेस में कुछ और ही एक्सपीरियंस होता है. तो फिर वो कुछ होता नहीं है डिसोनेंस. We need to figure this out, because you're absolutely right, because you're being fed something, you're seeing something else. There's a continuous kind of state of confusion, and then comes हो सकता है एक बार आपका बॉस चीख ले और उसी वक्त somewhere someone must have told you that this must be happening with just because you are from minority community. I'm sure people would be treating you lesser or differently, and probably that day something may have happened and the boss may have yelled. तो सामने वाला तो यही सोचने लगेगा. But I'm saying अपना दिमाग लगाओ. Why would you want to listen to anybody else? Listen to your Allah. Listen to your own people. I listen to my dadi. My dadi's son, that is my father. I listen to my mother. I listen to my जो पुरखे हैं मेरे. मैं किसी और को क्यों सुनूं? Why would I want to listen to anybody else? जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी जी है, आप why do you want to portray that no you are the पक्का मुसलमान? अच्छा भाई, आप पक्के मुसलमान हो तो सऊदी अरब में फुटबॉलर के साथ that girlfriend of his is staying. And in Saudi Arab, there is a law that you cannot stay together in a room, in a hotel, if you're not married. For them, the law is broken. For everybody else, it remains same. Yeah, उनके लिए हराम, किसी और के लिए हाँ, नहीं. तो ये गजब है आपका रजिस्टर. So what happens is that they confuse. And until and unless you will educate yourself both ways, Quran also, and the education that is needed for the real world, if you don't understand these two together, you are never going to kind of be at peace. But tell me, Rubika, when you pick up these stories and do in your bulletins, are you told that भाई ये आज हम हिजाब की स्टोरी कर रहे हैं तो आप मत करो? Is it told to you because you might get influenced or you might have a bias? No. And the best part about my channel, ABP Network, is that if you have an opinion, say it loud. And I'm thankful
that I've got an editor who takes care of this. कि freedom है. Freedom hai. And they know what am I known for. So you think it is going to be possible in this world, digital world, that I have my own opinion and I kind of put something else on TV? That doesn't work. That transparency today is known to everybody. So I have never been told. अच्छा ये भी कहते हैं कि स्क्रिप्टेड होता है ना, 2 लोगों को कि स्मिता जी आप शो में आइए और फिर आप तुम धड़ाम कीजिएगा. यू थिंक TRP के लिए. TRP के लिए. एंड व्हाट इज TRP? व्हाट इज TRP? आप ही तो ऑन कर रहे हैं. What is TRP? TRP is you watching it. Yeah. So you're basically saying it to your own self. TRP के लिए करते हैं. So I tell people कि आपको पता है TRP क्या होता है? TRP आप हैं. तो आप ये कह रहे हैं कि आपको ये सब पसंद आता है? नहीं. और and by the way, I have made sure and I want to tell you that ये जितने भी मौलाना, और सिर्फ मौलाना की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी हैं. But there's this one instance that I want to share. So there was this Maulana who would come, and now I stopped calling him after that. He knows it. I'm not going to name him. He knows it. So Sushma ji उस वक्त हयाती थी. So he called me and he said, could you help me? So obviously we are here to help each other. I said, what is the matter? So this Paulvi Saab tells me that वो हज पर जाने के लिए एक लिस्ट निकलती है विदेश मंत्रालय की तरफ से. सो इफ़ यू कुड हेल्प अस. सो आई सेड ये तो सब आपका काम है, करना क्या है? तो उन्होंने कहा बस आपको किसी तरह आप मंत्रालय में इफ़ यू कुड काइंड ऑफ पुट इन अ वर्ड फॉर अस कि ये इतना बड़ा जत्था है एंड इफ़ दैट कुड बी डन. तो मैंने कहा आई रियली डोंट नो हाउ इट इज़ डन. आई विल ट्राई टू फिगर आउट. And then the next line he says, 2 आप कमा लेंगी, 2 मैं कमा लूँगा. And I was like, मौलवी साहब आप ये क्या कह रहे हैं? And he realized that ये तो गड़बड़ हो गई है. मैंने कहा आपको कोई शर्म हया नाम की चीज़ है? आप इतना पाक काम. And this happened to me. He knows. If he's listening, he knows. And he still goes in the TV debates and he talks about Islam. And I'm saying it today at Smita's podcast that I will name you someday and I'll shame you so that this country knows that who they are dealing with. And I said, आपको शर्म हया है कि नहीं? आपको अल्लाह का खौफ है कि नहीं? And these are the people who talk about Islam and who talk about हम डरे हुए हैं. An interesting thing is that for this Maulvi calls my husband. He says वो बहुत आजकल नाराज़ रहती हैं, वो आजकल बुला नहीं रही हैं. And then he says ये वो जाने, आपने ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा. There are many men who think that they can take the liberty of saying this. And I'm not just saying men. There are women also who come across and tell women, is this news? Is this what you do news? ऐसे भी हैं. Earlier I used to say that मैं अपने Twitter handle say I will not say anything against women of my profession. I will not. There used to be a kind of an omerta code कि हम seniors को put down नहीं करेंगे, हम women journalists को put down नहीं करेंगे because there are so few of us, we should stand by each other. पर अब नहीं है ये. People have broken that code. That silent code. हाँ, that's gone. And I've seen senior women put down other women. They have broken the glass ceiling. It's because of their jaddojahed कि हम कुछ कर पाए और हमारी वजह से younger women are coming forward. They don't have to do the fights that we had to do. Similarly, we didn't have to do the fights. और अब वो ladies, वो महिला पत्रकार putting down the younger journalists and laughing about the way they are dressed. It just bothers me so much. Yeah, I remember the episode you're talking about. And is it only about these women who are out of the system these days? It's about even men who are out of the system these days. They give us the lecture on journalism.
I have seen how they used to operate. I've seen how they used to work, and we were babies then. We would kind of look up to them. We have seen how they used to work, how there was, there would be a meeting held of different channels, editors together. That, we think this is the news. This is how the agenda would be. So they should not be giving us gyan. At least we have all the transparency. I have seen the kind of professionalism, that was missing then. It is today. The transparency and the professionalism. And immediacy ना, आप लोकेशन पे हैं, आप लाइव कर रही हैं. Don't have the facility कि मैंने कुछ लिखा, उसके बाद इनपुट एडिटर डालेगा या give more ज्ञान into that और उसको ठीक ठाक करा के फिर शाम के 8 बजे 9 बजे जाके. You would know this more, no? Because you've worked with them also. Yeah. I'm saying I was just a baby. I didn't know all this. And now when I look back and I see these people lecturing us, I just wonder, how could you possibly do that? कोई धर्म ईमान नाम की चीज है कि नहीं है? You were there. You did things that nobody can even imagine. No, especially in Hindi media, Smita, if somebody wanted to kind of have naukri in some other channel, उसको नहीं मिल सकती थी. Because A knows B, B knows C, C knows D, and all ABCD are good friends. Networking. Strong friends. So you met A, you came out, A called B where you're working. And B would call you and say, हाँ तुम A के पास क्या कर रही थी? Your career was put at halt. Not just professionally, financially also. Because the kind of jump that you would get by going to the other channel, you can't because A is pally with B. And this used to happen. And now it doesn't happen anymore. वो जो old boys network होता था. टूटा वो, भयंकर वाला टूटा. And now you're giving ज्ञान to us. We have seen all of it. Yeah. So you're talking about women. I'm saying about these men also in the industry. Yeah. And everything is clear today. Everything. आपको किसी के बारे में जानना है, आप पूरा उसका इतिहास, गणित, भूगोल सब खंगाल सकते हैं सोशल मीडिया. Yeah. The social media, you feel that it has its negatives, but it's very strongly helped women in careers, isn't it? Do you feel that? It has. So people say, Rubika, they keep hurling abuses at you. They're more sharper than these blades and stones. And I say, I have never seen social media that way. I don't pay attention. I told you in the beginning, my father has put these blinkers. These people have, इनका कोई योगदान नहीं है मेरी जिंदगी में यहाँ तक पहुँचाने में. इनका कोई योगदान नहीं है. Why would I even give them, an iota of कि भाई आप हो, you are there in my life. हाँ, मतलब अगर लोगों का बस चले मुंह से निवाला भी निकाल लें. That's what they say. But social media in that ways has helped me because people from Guwahati, from far Thiruvananthapuram. और story ideas मिलते हैं ना वहाँ से. And they say we saw this. You look lovely in this attire. Your that one-liner was amazing. You wouldn't be in touch with them if social media wasn't there. So for me, it has always been a blessing. I want to play this. ये आपने कहा था.
I follow you on Instagram. Your Instagram handle is very interesting. I follow you everywhere. You flatter. So, your workout. It's very important you say, because you keep saying this कि mentally strong रहने के लिए physically strong रहना ज़रूरी है, and you keep putting that out here that it helps in the mental well-being. Tell me something about that. If I don't exercise, I'm not breathing. It's a must. I listen to my body. And so it started when I was in Z. I got pregnant. And obviously, pregnancy means halt, pause. अब क्या होगा? क्यों? Because you have to deliver, you have to be with the baby for at least those 3-6 months. हाँ. And I probably wasn't, I did not see it coming. I was anchoring on Z till my 8th month. Same you know here, this? same here, till 9th month. Yeah, till I became so big, and Subhashji once saw me and he said, "Oh, you're pregnant. That's why you're looking fat." मैंने सोचा बहुत खा रही हो इसलिए. And then I said, भाई बस अब ये anchoring 1-2 महीने तो रुक जाती हूँ मैं. This was in Z many years ago, of course. So Z doesn't kind of... No, they don't say anything. Yeah, they don't say anything. I anchor till the last day. And then I said, abhi ho gaya. And I used to wear my heels. Why I used to wear my heels? Because I was like physically very active. एक मिनट, अब मैं नहीं रुकूंगी, ये तो मैंने कहना ही है. Before this, viewers, Rubika and were in Kashmir. We were in Gulmarg as a pathrila pura, and ऊंचाई चढ़ रहे, बर्फ. It was snowing. There was ice everywhere. It was like we were trying to climb this area. Stop and it! She was wearing Nobody's listening. Uchi heel. And we were this group of journalists. All of us were like, wearing sneakers and coat and all. And Madam Ji, like, pure, I think you thought you are Sarah Bano, I think, in Kashmir. Uchi heel pen ke she is going up, and one of our journalists who was What with do us. you mean Sarah Banu? Deepika Padukone. Okay, Deepika Padukone कहाँ कश्मीर में थी यार? काजल होगी या फिर Sarah Bano, that Shami Kapoor वाला गाना I was talking about. ये चांद सा रोशन चेहरा. जुल्फों का रंग सुनहरा, which I could never understand. How is जुल्फों का रंग सुनहरा? सुनहरा कैसे हो गया जुल्फों का रंग? Anyway, we are digressing. So Aditya Raj Kaul was with us. Was it a blonde? He was the Kavi was the Kavi while writing was imagining a blonde girl. हाँ. तो नहीं तो I mean, of course these questions are typical कि journalist सोचेगा. और भैया भावुक हो गए. हाँ. काले बाल वाली लड़की खड़ी कर दी. कवि तो नहीं सोचता ना, कवि का imagination है. Blonde girl. Blonde girl. हाँ. So I used to always wonder why is he saying जुल्फों का रंग सुनहरा? झील सी नीली आँखें. Also I used to wonder कि कहाँ से झील सी नीली ज़हरा बानो के कहाँ? See, it's a typical blonde trait. Blonde trait. हाँ. We broke it. Broke that stereotype. ठीक है. वो टूरिस्ट की सोच रहा होगा ना कश्मीर में. Actually. That's why. So anyway, now let's come from Shammi Kapoor to Rubika Liyaquat. So Rubika ji chal rahi thi, and Aditya was like, how is she going to climb this mountain with these heels? And he started videoing, and she climbed it. हाँ. Okay. So you were in Z. Okay. ये बात सच है स्मिता. We must please agree to this that I have seen a lot of women saying that औरतों को अलग नज़र से देखा जाता है. This may have happened with kind of mutti bhar women. Okay. What I so people do ask me कि आप औरत होने की वजह से, you being a woman, was your journey kind of full of struggle? I said it was full of struggles. It is still full of struggles. But it will add on to my struggle if you just, kind of give it to me that, अरे आप तो औरत हैं, आपके लिए क्या ये full of struggle रहा कि नहीं रहा? What do you need for journalism? I generally ask this, and I outrightly ask this. What, do you need a private part for journalism? No, you don't need. You need a good brain, sharp eyes. You need... your nose to smell something is fishy. You need your ears. I'm all ears. And you need
fingers to write something or type something. Or if you are an anchor like me, you need a strong kind of voice and sharp tongue. What else do you need? What else do you need? And you need that passion. So is it lesser in a woman? Has it ever happened to me? No. It has never happened to me. For me, my age has been a problem. That I am pretty much younger than the people who are right now at 9 p.m. So bigger shoes, and so I would always be laughed at asking 9 बजे कैसे अभी तो तुम बच्ची हो. Stalwarts हैं, big faces, 9 बजे बहुत बड़ा जूता है यार, कैसे फिट कर पाओगी. वो ये नहीं था कि तुम औरत हो कैसे फिट कर पाओगी. वो इसलिए था कि तुम तो कम उम्र की हो, तुम कैसे फिट कर पाओगी. तुम तो ऐसे ऐसे बात करती हो, तुम कैसे फिट कर पाओगी. तुम तो एकदम अल्हड़ की तरह बिहेव करती हो. ठहराव नहीं है. हाँ. That's a big word. या तो तुम कैसे कर पाओगी. And I would be told that वो ज़हीनियत, थोड़ा ज़हीन आपको दिखना होगा. What do you mean दिखना होगा? How do I connect to my audience now? And it's been like good 5 years. I've been doing 9 and it's doing pretty good. तो मेरी भाई सफ़ेद दाढ़ी तो नहीं आ सकती और सफ़ेद बाल अभी हुए नहीं है, तो मैं क्या करूं. और मैं हाथ ऐसे ऐसे करके बात करती हूँ. तो जो वहाँ लोग टीवी देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर वॉचिंग और योर मदर इज़ वॉचिंग, ज़रूरी है कि उनसे ज़्यादा उम्र में होंगी तभी वो मुझे सुनेंगे. आई कैन बी देयर फ्रेंड, आई कैन बी देयर डॉटर, आई कैन बी देयर if they see me as a bahu, I can be their bahu. But it's the other way around also for women. Many women anchors are told that you're too old because television is about the younger medium. Yes. That you don't fit into that. Matlab, you are not extremely thin. You're not, like Navika's broken that mold by being a sari-clad and not extremely thin person who's anchoring on Hindi and English. And she's doing both. Very rarely will you find people doing both languages. But ask Navika. She could have, dropped the idea. She did not. She was consistent. She had that passion. You have this passion. You can sit back home and, relax or go on a long vacation and just, kind of go away from it. You also can say, I've been there. I've seen it all. Now, it's not the time. No, but you're still fighting. Has anybody ever asked you, Smita, or has anyone ever asked Navika about, कि अब बहुत हो गया, चलो हटो यहाँ से. नहीं करते हैं लोग, but it's like, you can say what you want. But that's just, you're fighting, no? You are not saying, just because I've been pushed, I'll be in the corner now. That fight is constant. No, you're fighting. I am saying that you have to fight for it. You can't say कि अब मेरा time आ गया, अब ये लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे. Like for example, you interviewed Prime Minister Modi. उस वक्त didn't people say in your own channel that अभी तुम junior हो, या फिर did people tell the boss, your bosses कि वो इतनी junior है उसको interview क्यों देने हो, seniors भी तो हैं उनको दे दो. मुझे नहीं पता अगर ऐसे बात की हुई तो मुझे तो they would have, no? I am not sure because nobody said it to me. If they had said to me, I would have obviously answered them. And they know that I will fight for it. They know. They ask me, would you be doing this? You want to do this? And I'm always a yes woman. I never say no. So you have to decide. As a woman, was there any sort of kind of partiality that because I'm a woman, I wasn't given that opportunity and a male counterpart was given the opportunity? No. I would fight for it. And then you would say, नहीं पर रूबिका हर कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी होता है, वो फाइट नहीं कर सकता है. नहीं भाई, अब आप बाहर निकले हैं घर से तो आपको फाइट करना पड़ेगा. प्लीज़ मुझे ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि
हम तो फाइट, हम इतना आ गए हैं, अब हम यहाँ बैठ गए हैं, अब इससे ज़्यादा तो हमसे फाइट ना होगा. नहीं, यू विल हैव टू फाइट फॉर इट एवरी डे. सो व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, I was 90 kgs. And then हाँ, बहुत सारे लोग थे जो ये कहते थे कि what would you do now? Because on screen you have to look a slim, good looking woman. Not that जो slim नहीं होते हैं, they are not good looking, but to each its own kinds. कि डेस्क जॉब करना पड़ेगा. हाँ, कि डेस्क जॉब करना पड़ेगा, असाइनमेंट पे बैठना पड़ेगा, असाइनमेंट पे बैठ जाओ, आउटपुट पे रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी. सो नॉट दैट दैट्स अ बैड जॉब, बट देन द थिंग इज कि वो अब नहीं, पर आपको जब एक बार कैमरा का खून लग जाता है ना, वो शेर के मुंह में जब इंसान का खून लग जाता है वाली कहावत नहीं है. सो यू ऑलवेज मिस दैट स्क्रीन प्रेजेंस एंड कैमरा. सो व्हाट डू आई डू नाउ? I don't want my editor to, kind of make bahanas and tell me. And हम लोग घूम गए ना जलेबी की तरह स्मिता. We had to come to our exercise वाला. मैं याद दिला दूँ. कितनी आप अभी देखो कमेंट सेक्शन में आएगा कि तुम कॉन्वर्सेशन कहाँ से कहाँ ले जाती हो. बात तू नहीं है ना, दो औरतें बैठ गई. हाँ, वो तो आएगा. मतलब अगर 2 men are talking तो अभी कोई नहीं लेगा कि किट्टी पार्टी है. अभी यहाँ पे देखना कम से कम 20 कमेंट होंगे, तो ये तो सोसाइटी वाली किट्टी पार्टी. टेक माय ब्लिंकर्स. एग्जैक्टली. हाँ, एक्सरसाइज पे. सो आई हैड 3 months. उस वक्त 3 महीने की वो होती थी. उसके बाद हुआ कि अब 6 महीने का है मामला. सो 3 months आई हैव टू बी नाउ बैक इन शेप. फिर क्या करें? सो आई हैव अ चाइल्ड इन माई हैंड एंड माई लियाकत साहब वुड कम एंड से, ए चलना शुरू करना. एंड लाइक, पापा सिजेरियन है. हाँ, सब हो जाता है. वो तो अगले दिन तो खेत में जाकर और फसल वसल काटती हैं औरतें. तुम क्या इसमें ये, चलो उठो उठो. 11th day I was walking on the road. ये नानी दादी ने बोला नहीं कि घर में बैठो, कि you should not. नहीं, तो वो उनका सबसे बड़ा दादा था ना, my father and my mother also. हाँ. Eat, have ghee, have वो सारे लड्डू गोंद के और वो सब चीजें. बट I hide that पिन्निया and all वो that. सब खाना है. और नहीं खाओ तो ऐसे मोटे मोटे माँ के आंसू कि तू मतलब हमारा जापा जो है खराब कर रही है. So anyways, so they were after my life. To get back into action. हाँ. And एक स्पोर्ट्समैन की बेटी, वो जब आपको देखते हैं, जब when your father who is himself a sports person, when he sees you, he knows that you have to be active, you have to be fit. And there are many people who say कि जिसकी जैसी बॉडी चलेगा. लेकिन क्या खुदा ने जब आपको पैदा किया था उस तरीके से किया था? यू आर ईटिंग रॉन्ग थिंग्स एंड पुटिंग ऑन वेट. डज नेचर अलाउ दिस? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. नो. तो ये फिजिकल जो आपने विच यू कीप्स राइटिंग इन योर इंस्टाग्राम, दैट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल वेल-बीइंग. Because high pressure jobs mein mental well-being is important, because managing home and work, it's not just for journalists, any woman, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं. So that exercise, when you put it out, it's to motivate other people or just for yourself? No, it is to motivate all the women who think कि एक बार शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब रखा क्या है जीवन में, अब तो कोई, अब क्या है, अब कुछ नहीं है. I really want to tell all these women that you have to live for yourself also, no? Everything is for बच्चा and everything is for pati, and there's nothing for you. So pati takes out time for himself. Bachcha is going to grow up and go away. And you would not be living your precious time. And then you would be complaining कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और देखो आज तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो. So why to look outwards? Look inwards. No, do things for yourself. क्योंकि we've all grown up with this की आइडियल कि माँ ने सब कुछ छोड़ दिया, दादी ने सब कुछ छोड़ दिया, नानी ने सब कुछ छोड़ दिया, वो पराठे बनाने के लिए, वो फैमिली को एक साथ रखने के लिए, did not have any needs of her own or put her needs aside, ambitions aside. वो आइडियल अब बदल रहा है, don't you think? It has to change. It has to change. अगर
मर्द हमसे बड़ा होता तो उसके सींग विंग होते ना, ऊपर वाले ने कुछ तो तय किया होता. बट आई एम टेलिंग यू, इफ ही नोज हाउ टू टेक आउट टाइम फॉर हिमसेल्फ, and I'm not saying that his work is lesser than ours. I completely respect my male counterparts, and also because their journey is also not smooth as we think. हम तो फिर भी चीख चिल्ला कर रो कर अपनी बात कह देती हैं. They don't, you won't see men crying. Yeah. You won't see men complaining. We say it and we finish it. हमारे यहाँ तो पुराने ज़माने में कहा भी जाता था, मेरी दादी वगैरह कहती है औरतें लंबा जीती है, इसलिए क्योंकि वो दिल में कुछ नहीं रखती, सब कह देती है. अ मैन हैज़ हिज ओन जर्नी, वो सब कुछ नहीं कह पाता है. सो आई रिस्पेक्ट दैट. बट आई एम सेइंग ये जो आपके अंदर इम्बाइब किया जाता है, इट इज़ इम्बाइब्ड इन यू दैट यू लेफ्ट एवरीथिंग फॉर योर किड्स एंड फॉर योर फैमिली. यू सैक्रिफाइस. आप त्याग की सबसे बड़ी देवी हैं. आप you tyago whatever you want to tyago. Don't tyago yourself. Don't sacrifice your own self. Respect your own self. If you don't respect yourself, nobody else will respect. You have to worship your body. If you can't worship your body, why would someone else respect your body when you are not respecting your body? So you'll say, how do you respect? You don't respect your body by eating unlimited things. You respect your body by keeping it in discipline. You respect your body by, giving it the kind of physical activity one would need. पुराने ज़माने में मेरी दादी हाथ से कपड़े धोती थी, मशीन नहीं थी उसके पास. वो अपनी किस्म की एक्सरसाइज करती थी. वो चल कर जाती थी, किराने से भर भर के लाती थी, ब्लिंकिट पे ऑर्डर नहीं करती थी. उसके घर में लिफ्ट नहीं थी, वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ती थी और 4 मंजिल उतर कर आती थी. उसका अपना रूटीन था और इसीलिए वो 5 रोटियां खाती थी. इज इट टुडे द केस इज सेम टुडे? नो. इट्स अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. आपके खेत नहीं है, आपका दफ्तर है. और but most women have this, like I just read a news report, जैसे स्पोर्ट्स वुमेन, मदरहुड और मेडल्स की चॉइस की बात हो जाती है. like what do you do for sports women? You have, for sports persons anyway, even men have that option कि नौकरी करें या स्पोर्ट्स को करें, because कितने लोग एक टीम में जा सकते हैं, कितने लोग ओलंपिक्स में जा सकते हैं, कितने लोग नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में जा सकते हैं. So your family pressure comes कि भाई कमाओ, गृहस्थी लगाओ, and all those things happen. And for women all the more, I think, right, that these choices are thoppered on women very early in life as compared to men. Yeah, and then you have to decide, no? You have to choose. And then you choose everything. And you leave everything. That's what happens. What has happened in my case, trust me, I was kind of, I knew what I want. And I knew that I would not have time to give it to my child. What would I do? And I would not want someone else to take care of my child. A help. I wouldn't want it from outside. So I said, I don't want a child. मैं जब मौका आएगा, जब मैं पूरा वक्त दे पाऊंगी, that is when I would do it. My mother was after my life, and so was my father. And they would just, be calling me and saying, you are not serious enough. I said, this is not happening. So I called all 3. So my mother-in-law, my father, my mother. And then I said, listen, you give it to me in writing that you will be there with my child. ये वाला नहीं कि अभी तो हम 4 महीने साथ हैं and then they just, kind of go away. What would I do? Because I know I love my career also. When it comes, obviously, I will have to be there with my kid. But there has to be someone who takes care of my child. And I'm so thankful, Smita. I'm so thankful. But sometimes I just look up and I complain, Mama, you promised me that you're not going to, you said, you promised me that you're going to be there. So she's there, she's inside me, and my father is there. It's your pinned tweet.
that your mother is not there with you, but she's within me. I have started laughing like her. I behave like her. yeah. And I've taken up things that I would just get irritated at times, क्या मम्मा क्या करती रहती हो? And I do it now. I have become her. And there's not a single day that I don't kind of, I don't think about her, or I don't. There was a huge fight, मेरी और ऊपर खुदा की. I would keep fighting with him. But then we became friends again. And now I've come to this new idea that there was this bigger assignment that he really wanted her for. And someday we are going to see her soon. There's not much time to grieve, isn't it? In the kind of run, chase one story. I so wish that I had time. And I really wanted that time. So I became the umbrella. So I don't like to call this thing as I have become the son of the family, because we are both daughters. But I took that, papa's place in the hospital. So I was the one dealing with doctors. I was the one taking care of mama. Bebo was there, my sister was there. Everybody else was there, but I was the one who was talking to the doctors. And like judges, doctors में वो नहीं होता है, जो फैक्ट है वो वही बताते हैं, भावनाओं पर नहीं चलते हैं. So I would obviously, kind of, they would tell me all those things. And so my sister remembers mom in so many different ways. I can't get out of the ICU. I'm still there. So you're right, I wish I had time to kind of... And you had to take the decision, let go. So there were so many decisions which were taken, and I kind of speak to my father even today about, and I tell him कि ये लेकर गलत तो नहीं कर दिया. You keep asking yourself, no? And he say, तुम उस गली जाती क्यों हो? But my thing is, मैं उस गली से बाहर निकल ही नहीं पाती. And I was anchoring the 10th day. Yeah, I remember that. So PM started working the same day. And you understood that. I saw how you... Yeah. And no matter how people talk about him, but I saw him as a son that day. A strong son who can't be crying in front of the public. I could relate to him. That everybody would be looking at you, how you take this. She was my strongest pillar. She was my bestest buddy. And she had gone. And she was the one who promised me that she's going to be there. So I could actually relate to what was happening, or what would be happening when all of this happened with Prime Minister. And I also started, he called me when Mama was in ICU. PM Modi called you? Yeah. And he spoke to Mommy. And it was 12th May. She left us on 20th May. So 12th May, she went on ventilator. He got to know. He called me. He asked me. It was Eid. And everybody was celebrating. And we were in the ICU. And imagine the Prime Minister of the country gives you a call. And he wishes you well. He wishes you Eid. And he says if he could speak with Mama. I remember that shine in my mom's eyes. That, the Prime Minister of this country has called to find out if she's okay or not. And I remember she talking to him, and she couldn't speak because obviously tubes the unke paas. She could hear.
ही सेड आप जल्द ठीक होंगी, मुझे पूरा यकीन है. सो उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे उठाए. And she looked at me and she said, tell him that I'm very strong. She was in the ICU, ventilator पर, but she's strong and she asked me to deliver this to him. So I said, वो अपने दोनों हाथ उठाकर कह रही हैं कि वो बहुत ताकतवर है and she'll fight. That is the reason I've said वो खूब लड़ी मर्दानी. She fought. She did not. आखिर तक वो मुझे ये बता कर गई है that even if you are in deathbed, do not stop fighting. Keep fighting. Keep struggling. No matter how difficult it is, just keep doing it. So whenever I'm low, whenever I think that, why is this happening to me? I just think of her. वो अंदर से वो strength निकाला. I think of this. And I'm back again with those unseen swords in my hand, and I say, Aja. Why do you have to do this? Yeah. She's here. Okay. Yeah. Because we were in touch all through. I was dealing with my own grief and, you were dealing with that at that stage. Those were difficult years. I think... You remember I called you and I said, I'm scared. Yeah. Yeah. I was really scared. And I remember I was standing in the corner there of the IC, the room. It was an isolated room because उस वक्त कोरोना की wave भी चल रही थी. And I was standing in the corner there and I called you. Yeah. Because I didn't know what to do. I couldn't have cried in front of Papa. I couldn't have done it to my younger sister. They were all looking up to me. Isn't that hard, Rubika, to be the strong one always? No, it is very hard. And that is why I sometimes miss being that bacha of mama. Yeah. Where you just, you just keep your head in her lap and say, Mama, bahut. Yeah. So, it gets difficult at times, but I'm like I डांट भी said. चाहिए, वो प्यार भी चाहिए, वो लाड भी चाहिए. हाँ. But The combination, not just one thing. नहीं अरे पूरा होना चाहिए. फिर तो लगता नहीं है कि मम्मा है. Yeah, but my father does it. So the good part is that उन्होंने मेरे बाल बनाए थे ना बचपन में. उन्होंने मुझे नहलाया, उन्होंने मेरा टिफिन पैक किया क्योंकि मम्मा तो PhD कर रही थी. मुझे जो 5 साल वो याद है. So he takes care of it now also. So अब वो दोनों बन गए हैं. You posted the other day a tweet which I found so interesting when, there was some comedy thing which was running and you said that, वो खुल के हंस रही थी लड़की. और उसमें आपने कहा कि this is what my father does. He cracks jokes and sometimes I laugh. And I laugh खुल के. ये भी बात होती है कि लड़कियों को बोला जाता है इतनी खुल के नहीं हंसना. मुंह फाड़ के क्या हंस रही है ना? है कि नहीं? That you told मुंह बंद करके हंसो या हाथ ऐसे रखो हंसते टाइम. दांत नहीं दिखाओ. अरे बहुत सारी चीजें. हाँ, but you said that you do this when your father cracks it. I also remember laughing at jokes which my father cracks and they were just not funny. But I would laugh just to दिल रखने के लिए कि आपका जोक बहुत ही funny था. No, but he exactly knows what would make the funniest of things, like 30, 31, 32, 34, 35. And I would call him and I say 35. And he would be, I knew tu 35 pe aase. He knew. There's a private joke that you are sharing with him at that time. No, those funny things जिस पर कोई नहीं हंसेगा. ये क्या है? I would be laughing on those. He knows exactly कि ये वाला joke उसको भेजना है. And she would go mad. And then she would give me a call back and she'll just laugh. And I'll just laugh. And he'll say, पसंद है. And I would keep laughing. But खुलकर हंसना ही नहीं.
बहुत सारी चीज़ें सो यू सी जो मैंने बाल कस के ऐसे बांधे हुए हैं, व्हेन आई केम हियर इन द इंडस्ट्री, रेड लिपस्टिक मतलब एंटरटेनमेंट की एंकर। सीरियसली? हाँ, मतलब आप यू कांट लुक गुड। ड्रेस डाउन। हाँ, एकदम अतरंगी रहो। हाँ. अंदर कोई भी है तो बाहर कुछ भी पहन लो, कुछ भी मतलब यू आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन योर ब्यूटी, यू आर पेइंग अटेंशन ऑन द कंटेंट। ये क्या बकवास है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाई कांट आई बी बोल्ड एंड इंटेलिजेंट एट द सेम टाइम? नहीं, वो तो स्टीरियोटाइप है। अगर आप बोल्ड हैं तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, और रेड लिपस्टिक लगाई है तब तो आपको शाहरुख खान की ही बात करनी है। ओके. मतलब तब आप नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात नहीं कर सकते। ये अच्छा, और जब आप सो आई रिमेम्बर एंड आई वॉज द फर्स्ट वुमन इन द इंडस्ट्री। भाई उस वक्त तो सब बड़ी खूबसूरत, एकदम सलीके में, दायरे में रहकर अपनी बात कहती थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारों से, जहाँ पर इस बात का फैसला ले लिया गया है कि अब चुनाव हर 5 साल में अलग अलग राज्यों में नहीं होंगे, एक ही बार में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। You know, now it sounds funny, but you're right. हाँ, ऐसे ही होता था। हाँ. एंड मान लो अगर किसी बच्ची के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, रेप हो गया है, सो यू वुड कम एंड से, और इस वक्त एक बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं। एक 5 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का एक मामला सामने आया है। सो दैट्स इट, ख़त्म। अब ये 2 अलग अलग खबरें हैं। व्हेन आई केम, I used to feel the news and say it. And I still do it. I can't just read and do away with it. So, जब एक 5 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ है, तो why will I not frown? Or why will I not show that I'm upset and angry? I'm not saying कि पिछला जो होता था वो गलत था, लेकिन अब जो हो रहा है वो दौर अलग था। बट आई वॉज टोल्ड दैट बिहेव, यू नो, काइंड यू। हाँ, मतलब एक इवन टोन होना चाहिए। इवन टोन होना चाहिए। डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ योर जेस्चर्स। हाथ क्यों उठा रही हो? डेस्क पर ही रखो। अब मैं कैसे चिपका दूं हाथ अपना? When I'm talking, there are a lot of movements. You know, this came because there was a lot of movement. जैसे भरतनाट्यम हो रहा होता था। सो क्या करें, ये तो रुकती ही नहीं है। सो माई स्टाइलिस्ट टोल्ड मी कि यू नो, लेट्स पुट अ बिग रिंग, सो पीपल विल जस्ट कीप लुकिंग एट द रिंग एंड दे वुड फॉरगेट दैट कि हाथ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। सो आई स्टार्टेड। पहले मुझे ना, तब आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, और तब मैं बस इजाद ही हुई थी। सो पीपल वुड रिमेंबर मी, वो बड़ी अंगूठी वाली, डिफरेंट कलर की अंगूठियां पहन कर आएगी। अच्छा, वन थिंग, व्हेन आई वुड स्टैंड, नाउ कैन आई स्टैंड एंड टेल यू? या ऑफ कोर्स। ओके, सो इफ अ वुमन इज स्टैंडिंग, शी हैज टू स्टैंड लाइक दिस। व्हाई कांट शी स्टैंड लाइक दिस? Or when the woman is sitting, she has to sit like this. Okay, I'm comfortable sitting like this, fine. But why can't I sit the way I want to sit? You understand? Yeah. If I'm angry and I have to say, listen, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। अरे ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? मुझे नहीं पसंद आ रहा है वो जो कह रहे हैं कि आप कहीं की लाड़ साहब है क्या। आई रिमेम्बर जितिन मांझी उस वक्त सीएम थे। भगदड़ मची, दशहरा का या दिवाली का टाइम था, भगदड़ मची, कई लोग मर गए। सो मुझे फ़ोन किया, छुट्टी थी, मुझे फ़ोन किया कि बड़ी भगदड़ मच गई। मैं जी में ही थी, आप आओ। तो उन्होंने कहा सीएम साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जितिन राम मांझी आए और उन्होंने अपनी बात कहना शुरू की। एंड आई एम स्टिल अ कंपैरेटिवली न्यू एंकर, एंड मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ही सेड, आप बड़का लाड़ साहब बन रही हैं। ही सेड इट टू मी। अच्छा, वहाँ से कहा गया कि सीएम साहब है। मैंने कहा सुनिए,
ना मैं बड़का हूँ ना मैं लाड़ साहब हूँ. अच्छा, this was never used. This tone by an anchor was never used. Anchors were like, तमीज से बात करेंगी, जी हाँ हो गया, ओके बाय. टफ क्वेश्चंस पूछती थी पर they wouldn't give it back to them then and there. I did it. और उसके बाद बिहार से मुझे बहुत कॉल आए. मेरी जिंदगी का पहला वो इंटरव्यू वैसा वाला था. एंड द पीपल आर कॉलिंग मी एंड देन दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइज मी. ये तो वही है सीएम साहब को जिसने. तो मैंने कहा अच्छा, पीपल liked it that you put it out there. They liked it कि इसने हमारी बात कही है. एंड उसमें एक बात थी जिसमें मैंने उनसे कहा कि मैं 5 मिनट में अपने घर से यहाँ स्टूडियो आ गई सीएम साहब, और आपके मंत्री लोग वहाँ घंटियां ही बजा रहे थे. ऐसे सवाल नहीं पूछते थे. दे वुड से आप किस तरीके के इंतजामात हैं, आप उन तमाम घायलों के परिजनों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, और आप उन सभी लोगों से जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको एक सीएम के तौर पर क्या बताना चाहेंगे. क्या प्रशासन से गलती हुई है, क्या शासन से गलती हुई है. एंड आई वॉज गोइंग द अदर वे. क्यों नहीं किया? मैंने कहा भाई मैं आ गई तो आपके मंत्री कहाँ हैं. तो उन्होंने कहा देखिए मैडम, आप पता नहीं है या आप समझ नहीं पा रही हैं. अब वो भी सदमे में, ये कौन आ गया है, कैसी बातें कर रहा है. एंड आई वेंट ऑन एंड ऑन. सर आप वहाँ बैठ कर बड़का लाड़ साहब बन रहा है. एंड आई गेव इट देन एंड देयर. आई सेड ना मैं बड़का हूँ ना मैं लाड़ साहब हूँ, मैं एक अदना सा एंकर हूँ. आई न्यू आई वाज अदना सा एंकर. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट people want an anchor who is from them. They don't want those high priestess. ये अर्नब also said this, you know, when अच्छा, उनसे भी जब मैंने पूछा था that, you know, like why do you put yourself out there. He was criticized a lot for this because he was like, he lives the story, right? Lot of criticism on that कि तुम क्यों story में involve हो रहे हो as an anchor. But I think he also changed the way it was. You like it, you don't like it. If you don't like it, don't watch it. You know, I seriously believe वो आमिर खान वाली बात सही है कि नहीं अच्छा लगता भाई नहीं देखो. Go to the next channel. Ab you are lucky enough in this country that you have so many channels. You don't have to watch only one channel. But yeah, you are feeling it. You are feeling the news. In fact, Rubika, I still remember जब Z पे पहले बार, you know, when I was called on your show, I was also told this that आप आए. Z में जानते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम डिबेट में नहीं पहुंचती. I don't like that. एक मौलवी को बिठा लिया, एक साधु को बिठा दिया, लड़ो. I don't like coming on debates where they do this. I'm not a religious person. I don't understand this. So I don't come that. And they said कि रूबिका के शो में आने के लिए, and I used to do Rohit's show and the others, you know, in the channel. So I said कि गुस्सेल एंकर है क्या? You know what I mean? कि मतलब मैं कुछ बोल दूं और आप गुस्सा हो जाएं, इट विल बिकम अनकंफर्टेबल. अब मेरे को वो 3 मिनट मिलेंगे पूरे शो में या 2 मिनट मिलेगा. आई डोंट गेट इनटू अ फाइट विद यू. तो मुझे बोलने देंगी? सो दे सेड हाँ वो गुस्सा हो जाती हैं किसी और के साथ, आपके साथ नहीं होंगी. So I came on your show and that's how I became a friend of yours because that's how we met and you know we this is kind of a perception कि मैं ना सब पर चीख जाती हूँ. मैं सब पर नहीं चीखती हूँ, मैं हर उस आदमी पर चीखती हूँ जो गलत होता है. और वो चीखना मतलब वैसे नहीं होता है. वो लॉजिकल. हाँ. और my show will never cross the Lakshman Rekha. You pick up any of my shows, I won't let anybody disrespect my guest. Yeah. We can fight on the point that we are discussing. There could be an ideological war. There could be, logical war, war of opinion. But it won't get personal. And the moment I feel it's getting personal, I'll say, stop right here. Many people let it loose. कि जाओ, थोड़ा और इसको ढील देते हैं. I stop it then and there. That, no, nothing doing. Because I know you'll be friends after this. Yeah. But my show, I don't want that dent on my show. Which people don't realize. They see these spokespersons of various political parties लड़ रहे हैं और they pick up cudgels कि देखो ये लड़ रहे. और बाद में वो लोग दोस्त बन जाते हैं.
मतलब वो स्टूडियो से बाहर निकल के चाय पानी पीने साथ चले जाते And हैं. our जनता is so भोली, Smita, हाँ, so भोली, they think that they choose the party or the candidate so that they can fight for their rights. अब हो क्या रहा है? They are fighting for them. yeah. No, you don't need to fight for them. क्या फर्क पड़ता है कि ये हार गया और अब नया आएगा? There is an ideological fight that should be there, or if there is a difference of opinion, let it be there. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे. I have seen it in my घरों में दरार है यार. अरे मेरे अपने उस ग्रुप में. तो कई बार ये होता है कि आपको कोई एक इवेंट चल रहा है या कोई एक न्यूज़ चल रही है, उसमें फॉरवर्ड्स भेजने लग जाते हैं जैसे आप खुद उस पार्टी का हिस्सा हो. आप थोड़ी हिस्सा हो यार उस पार्टी का. व्हाई वुड यू बी people, citizen at large should understand that governments need to fight for their rights. They have to work for their betterment and development. You don't have to work for them. और ये उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप लगा देते हैं. आपको मिला होगा कोई टास्क, इसको तो भर भर के सूटकेस भर के भाई साहब पैसा मिला होगा, जब बड़े बड़े इसने बंगले खरीद लिए होंगे. आप करवा दो ना, करवा दो, ऑडिट करवा दो, एक आध FIR मेरे ऊपर दर्ज करा दो, फाइंड आउट. अरे मत बोलो, कर भी देंगे. That is what is the most. तो करवा दे. हाँ, they should do it. Yeah. At least they would know what's the truth is. Yeah. What the truth is. Yeah. Okay, so as we conclude, I just want to ask you that would you encourage young people to get into journalism, or do you feel कि यहाँ पे अब कुछ नहीं रहा? It's too filled with agenda artists. You think I'm going to behave like those ma'ams who have left the place and now they say अब सब गंदा है? Look at this. No. If you love this place, if you have passion for journalism, if you really want to be connected with the public, with the citizens at large, this is your place. And I would never say that don't be here because it's full of filth and things have changed. No. Come here and see it for yourself. Because हर किसी की अपनी एक कहानी है, हर किसी का अपना एक चश्मा है. For me, it's a beautiful platform where you can say what you think is needed to be changed, where you can tell people that this is right and this is wrong, and where you can tell the government and tell the people who are responsible that, you know what, if you don't do things better, we are right here to hold you by your collar. But people say that अब वो freedom नहीं है. Lots of people say that truth to power जो बोलना चाहिए, people aren't doing that. Journalists aren't doing that anymore in India. Is that true? I don't know why do they say this. Everything is here in public. पहले तो digital media इतना active भी नहीं था, स्मिता. Now तो if I go to Joshimath, for example, or if I go to a place where news is happening, I'm not the only one who's reaching there. There are 10,000 different YouTubers who are reaching there. Can you twist it? Is this the time when you can actually want to do what you want to and you can make an agenda? This is not the place. Yeah, there are people who used to do it. Because, you know, they were the only people who could reach there and who could do things. Today, you can't do that. Today, things are more transparent than they were ever. Today, if you think someone is kind of trying to play up to the agenda, you would figure it out right now. अब भी आप 4 कीवर्ड्स डालेंगे और आपको पता पड़ जाएगा कि किसने क्या किया. हाँ, एक चीज़ ये है कि आप बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं चीज़ों को. There are different ways. If I'm standing at this angle, I look at this gamla, a pot in a different way. You are at a different angle. You may see it at a different way. You can use 10 different sentences to explain, and I would use 10 different sentences. But what happens is that people who like your ideology would see only your
part and abuse my 10 parts. People who like me would abuse you for using those 10 lines. Thing is, there will be your filter, there'll be my filter, but you can't take away from the fact that there is a gamla. There's a gamla. So, hakikat you can't hide. You can give a little bit of filtering or tinkering is what journalists with an agenda can do. But the facts you cannot hide And they anymore. know it. Everybody know, every single person knows it in heart. But बोलना है कि मत बोलो, कोई बात नहीं. there are restrictions which are there, and there's like the freedoms are gone. It's not it's democracy at peril. खत्म है सब कुछ. Which card I told you? हाँ, victim card. Victim card. When you don't get anything, you start playing that victim card. You start saying, oh, we left that place because it is so much full of filth. It's better, to start our own YouTube channel and say what you want to say or write what you want to. अच्छा भैया, जब आप थे तब? Also, when you are on television and you say कि TV मत देखो, that's another thing that I have seen. मेरे को समझ में नहीं आता, रोजी रोटी वहीं से तो कमा रहे हो तुम, और वहीं पे तुम you are trying to do your journalism and telling people don't watch TV. I can't understand that other aspect of some journalists who say that. It's called doctorate of दोगलापन. अच्छा, हाँ. आपने इसमें PhD कर रखी है. आपको पता है कि कौन सी गेंद, कौन सी टोपी कब निकालनी है and कब रख देनी है. And I just look at them and I smile and I say, when you would look at yourself in the mirror, you would know what the truth is and what you did. But interesting part is that they would look at the mirror and they say, मुझसे खूबसूरत तो साला कोई है ही नहीं. अब आप क्या कर सकते हो? हाँ, but that's just it. That अगर you get that kind of arrogance, I don't think you can do good journalism. You can't be a good artist also. जब तक वो stage fright नहीं होता ना कि हाँ मैं audience के सामने जा रही हूँ और मुझे ये गाना गाना है. I had Malini Awasthi in the podcast, and she was saying that before every show you need to have that little bit of nervousness. Oh yes. So jab tak you're not a sensitive person and you don't have self-doubts, you cannot anchor well also, isn't it? Yeah, my heart goes boom even now when there is like the countdown. Are you ready? 10, 9, 8, 7, and sometimes I'm like shivering कि अब क्या करूँगी? What will I do? What will I do? And the moment they say cue, I get in some other zone. कई बार मुझे 1 घंटे बाद पता चलता है कि what did just happen? What were we doing? Because I'm into it. And if you think कि ये सब तो बनावटी है, then God bless you. Because I know how it feels to sit in the chair and ask questions and say things जहाँ आपको ये पता है कि ये सुनते ही there are people who are going to kind of abuse you, character. And one more thing I must tell you, ये all these people, ये जितने भी trolls हैं, इनसे बस मुझे एक I want to tell them, all these male anchors, ये इनका character assassination कभी नहीं करेंगे. No male anchor you would see has gone through this character assassination. But the moment she is a woman, आपको 10 लोगों के साथ they will kind of हाँ, link you and आप उन सबको गालियां दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, fine. But when you start looking at me as a woman who is of a bad character, this is something where the mothers need to enter. कि अगर वो तुमसे इत्तेफाक नहीं रखती है या तुम्हारे हिसाब की नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी है. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दोगे. Yeah. And all my friends in the industry, the male friends, उनको भी खूब गालियां पड़ती है, पर उनको वो वाली गालियां नहीं पड़ती है जो मुझे पड़ती है, जिसमें तरह तरह के आपको नाम बुलाए जाते हैं. और I remember
they had just kind of Degrading fabricated. sexually. हाँ. That is मतलब dehumanizing, degrading. वो बात जो होती है वो male anchors don't face that. I've seen that. No, a Yeah. woman faces it. Yeah. And my father is also on social media. Hmm. You think it doesn't reach my father? It does reach my father. But then, does it affect us? Initially, it used to. Now, it doesn't. Keep doing what you want to do. But these are some of them, like I know some of the trolls. I know them that they are educated, they hold jobs, but उनको भी शर्म नहीं आती ऐसे करने में. I remember when you were in a temple and you tripped, and and you said hala, right? And then you said भगवान का शुक्र है or something like I that. said Allah का शुक्र है. अल्लाह का शुक्र है. हाँ. Allah का शुक्र है. Because I was about to fall. Yeah. And the next moment. उसका मीम बनाया गया. हाँ, नहीं उसमें ये था कि I said अल्लाह का शुक्र है and then I said और भगवान का भी शुक्र है. Because I was in राम जन्मभूमि. हाँ. बट फिर उसका मजाक उड़ाया गया कि हाँ इसको नहीं तो डंडे पड़ते इसलिए उसने कहा. अच्छा, आपको लगता है कि सामने वाला आपको फोन करके बोलेगा कि आपने अल्लाह. आई एम द वन जिसने पाकिस्तान का एक वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तानी गेस्ट बुलाए हुए थे मैंने. 3 पाकिस्तानी गेस्ट थे. उन्होंने कहा आपके यहाँ मुसलमानों की हालत देखिए, बहुत बुरी है, आपके यहाँ पर मुसलमानों को डराया जाता है. सो आई सेड हेलो, मेरा नाम रुबिका लियाकत है. मैं हिंदुस्तान की धरती पर इस वक्त बैठी हुई हूँ और इस वक्त पूरी दुनिया मुझे सुन रही है. अल्लाहु अकबर. Did anyone come and stop me? And I kept saying अल्लाहु अकबर. और वहाँ पे आरएसएस के लोग बैठे हुए थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हुए थे, एंड अदर बीजेपी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन वर ऑल्सो देयर. आई सेड अब तू बोल के दिखा. कैन यू से जय श्री राम देयर? You would be beheaded. That's the beauty of my country. कि मैं जितना फ़ख्र से जय श्री राम कह सकती हूँ उतना ही फ़ख्र से अल्लाहु अकबर कहूँगी और मुझे कोई पकड़ के मारेगा नहीं. वाह रूबिका, hats off to you. I hope that you always have the strength and I'm pretty confident you will always have the strength to speak your heart and your mind whenever you are in front of a camera or off camera. So all the best to you. Thank you so much. It was lovely talking to you. I keep asking questions, but this was a little different. You were asking questions और मैं कह रही थी मन की बात. And keep watching Podcast with Smita Prakash. Thank you so much. Thank you for watching or listening in to this podcast on whichever channel you have seen this or heard this. Do like and subscribe. Namaste. Jai Hind.